नमस्कार, मैं कॉमरेड लीना नमस्कार नमस्कार, मैं कॉमरेड लीना गावड़े मेरी साथी प्रभा के साथ आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक साथ आना एक शुरुआत होती है, मगर एक साथ काम करना यशस्वी होने की निशानी होती है। आज हमारे बीच ऐसे ही सभी महानुभाव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। Each one of them are serving this organization in various capacities, and their contribution cannot be easily expressed by combination of words. ऐसे ही सभी महानुभाव और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मैं कुछ खास पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शब्द जहाँ छोटे नजर आए ऐसे महानुभाव है आप सब। शब्द जहाँ छोटे नजर आए ऐसे महानुभाव है आप सब। जो अंधेरे में रोशनी लेकर आए ऐसे चिराग है आप सब। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, बैंक ऑफ इंडिया की शान है आप सब। बैंक ऑफ इंडिया की शान है आप सब। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। तो आइए हम सब साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। I would like to call on stage all the dignitaries. मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करती हूँ हम सबके चहीते नेता, द चेयरमैन ऑफ आवर यूनिट, कॉमरेड एम.बी. त्रिपाठी सर को। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द डायस। दोस्तों, हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास एक ऐसे कुशल लीडर है जिन्होंने तन मन धन से हमारे यूनिट की सेवा की है। आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आवर यूनिट, कॉमरेड संजय सावे सर जी का। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द डायस। हमारे बीच एक बहुत ही बड़े कुशल और रिस्पेक्टेड नेता है, द चेयरमैन ऑफ आवर फेडरेशन, कॉमरेड बी.एन. मधुसूदन सर। मैं जोरदार तालियों के लिए उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड आई रिक्वेस्ट Second sir to escort Comrade B.N. Madhusudan sir. Thank you sir for gracing the dais. हमारे बीच में बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है कॉमरेड संजय दास सर, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न इंडिया ब्रांचेस, जनरल सेक्रेटरी AIDOS। आई रिक्वेस्ट डीजीएस वाइस प्रेसिडेंट विकास मोरे के साथ कॉमरेड संजय दास सर। थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द डाइस। मैं now
Yogesh Godge to escort our Executive Director, Shri P.R. Rajgopal sir to come on the dais. I apologize. May now request AGS Comrade Yogesh Godge to escort our Executive Director, Shri Swarup Das Gupta sir to come on the dais. Thank you, sir, for gracing the dais. May I now request DGS Pankaj Kumar to escort our Executive Director, Shri M. Karthikeyan sir, to come on the dais. Thank you, sir, for gracing the dais. May I now request DGS Comrade Harsha Rathod to escort our Executive Director, Srimati Monica Kalia ma'am, to come on the dais. जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. Thank you, ma'am, for gracing the dais. May I now request AGS Comrade Ajay Sawant to escort Shri Ashok Pathak sir, Chief General Manager HR, to come on the dais. Thank you, sir, for gracing the dais. May I now request AGS Comrade Alok Kumar to escort Shri S.K. Roy sir, General Manager, NBG West 1, to come on the dais. Thank you, sir, for gracing the dais. अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ एक कुशल नेतृत्व को. अगर आपके कार्य दूसरों को सपने देखने में, ज्यादा सीखने में, कुछ ज्यादा करने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो समझ लेना कि यह एक बेहतरीन नेतृत्व है. सर, ऐसे ही आपका समर्पण और दृढ़ संकल्प हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है. हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा ही नेतृत्व है. I request our General Secretary, Comrade Nilesh Pawar sir, to escort the General Secretary of our Federation, Advisor to AIBOC, Leader of Leaders, Comrade Sunil Kumar sir, to come on the dais. जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. थैंक यू सर. संक्षेप में मैं सुनील कुमार सर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि कदम बढ़े जिस दिशा में जीत खड़ी मिली उसी वेला में. कदम बढ़े जिस दिशा में जीत खड़ी मिली उसी वेला में. जीत कर जिसने बढ़ाया हमारा मान, ऐसे सुनील सर है हमारी शान, ऐसे सुनील सर है हमारी शान. थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग द डांस. Now we would like to felicitate our General
Comrade Nilesh Pawar sir on his selection as working president of Federation of Bank of India Officers Association at the hands of Comrade Sunil Kumar sir. I request all the dignitaries also on the dais and all EC member of our unit to join felicitation of RGS Comrade Nilesh Pawar sir. Nilesh Pawar जिंदाबाद जिंदाबाद निलेश पवार जिंदाबाद जिंदाबाद बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद और एनर्जी की जरूरत है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद और यूनिटी लॉन्ग लीव और यूनिटी लॉन्ग लीव। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। Comrade Nilesh Pawar जिंदाबाद Comrade Nilesh Pawar जिंदाबाद बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद। Thank you so much all the dignitaries. दोस्तों, हम पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और वरिष्ठ अधिकारियों का, हमारे लीडर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आइए इसी प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए सबसे पहले वंदना करते हैं भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणिं धेवरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं मोझरं ग्रामोराञ्जन स्वस्तिक गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। थैंक यू सो मच वृंदा मैम। गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलन की भी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए माता सरस्वती की करते हैं हम प्रार्थना, सच्चे मन से करते मनोकामना। ज्ञान की देवी है माता सरस्वती।
आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन करें हमारे समस्त आदरणीय अतिथि। Thank you all the dignitaries. दीप प्रज्वलन के साथ आइए शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जैसे कि आप सब जानते हैं, टुडे इज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम सभी पृथ्वी रूपी घर में रहते हैं जिसकी छत पर्यावरण है। हमें इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे सम्मानीय अतिथियों का सैपलिंग देकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं चेयरमैन ऑफ अ यूनिट कॉमरेड एमबी त्रिपाठी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सैपलिंग एंड मोमेंटो के साथ कॉमरेड बी एन मधुसूदन सर, द चेयरमैन ऑफ आवर फेडरेशन का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। Thank you for doing the honor, Comrade Tripathi sir. May now request the President of our unit, Comrade Sanjay Save sir, to welcome Comrade Sanjay Das sir, the President of our Federation, General Secretary, Eastern India Branches, General Secretary, AINBOF, with a sapling and memento. Huge round of applause, comrades. Thank you for doing the honor, Comrade Save sir. May I now request Chairman of जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों।
Thank you, sirs, for doing the honors. अब मैं डीजीएस विकास देव सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री पी.आर. राजगोपाल सर का सैपलिंग आई अपोलोजाइज अब मैं डीजीएस विकास देव सिंह सर को अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री स्वरूप दासगुप्ता सर का सैपलिंग और मोमेंटो देके स्वागत करें. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you for doing the honors, Comrade विकास सिंह. अब मैं कॉमरेड योगेश कोगे से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एम कार्तिकेयन सर का सैपलिंग स्वागत करें. Ladies and gentlemen, please applaud. Thank you for doing the honor, Comrade Yogesh Gorge. May now request Comrade Harsha Rathod to welcome our Executive Director, Srimati Monica Kalia ma'am, with a sapling and memento. तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए दोस्तों. Thank you for doing the honors, Comrade Harsha ma'am. May I now request Comrade Vikram Kharade to welcome our CGM HR, Shri Ashok Pathak sir, with a sapling and memento. Big round of applause. अब मैं कॉमरेड आलोक कुमार से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे जनरल मैनेजर एनबीजी वेस्ट 1 श्री एस.के. रॉय सर का सैपलिंग एंड मोमेंटो के साथ स्वागत करें. Thank you, sir. Thank you for doing the honor, Comrade Alok Kumar. Thank you, साथियों. मैं अब हैंडओवर करती हूँ मेरी साथीदार प्रभात को. Thank you, Leena ma'am.
Everybody holds the possibility of a miracle. A day like today makes every tomorrow a vision of hope. A hearty and warm afternoon to all of you. I'm Prabha and I will be your host for the rest of the session today. It's indeed an honor for me to be amongst all of you on this special day of splendor. Taking things further, we would like to extend our warm welcome to other dignitaries who are present amongst us today off the dais by presenting them an eco-friendly bouquet from the hands of other office bearers and EC members. I request you all to give a big round of applause as we welcome each one of them. First, we would like to welcome the General Secretaries and office bearers from other units for adorning us with their presence today. Comrade Sunil Lakra, General Secretary, Jharkhand Unit. Please give a big round of applause. Comrade Pankaj Kapoor, General Secretary, Delhi Unit. Comrade N. Amarnath, General Secretary, Southern Unit. Comrade Mahendra Donsing, General Secretary, Vidarbha Unit. Comrade Madhu, General Secretary, Pune Unit. Comrade Kamaljit Mohapatra, General Secretary, Odisha Unit. Comrade Kuldeep Swankar, General Secretary, MP and Chhattisgarh Unit. Comrade Saurabh Srivastav, General Secretary, UP and Uttarakhand Unit. Comrade G. Sanil Kumar, General Secretary, Kerala Unit.
Ganesh Kumar Pandey, FBOIOA Treasurer. Comrade Prakash Oren, Treasurer, Jharkhand Unit. Next, we would like to welcome our respected general managers who are present in this esteemed gathering. Shri Rajesh Tingle, sir. Shri Sudhir Ranjan Padi, sir. Next, we would like to welcome the zonal managers and deputy zonal managers present here. Shri Sahani sir, Mumbai South Zone Zonal Manager. Shri Narayan Singh Devra sir, Mumbai North Zone, Zonal Manager. Shri Anil Jadhav sir, Zonal Manager, Navi Mumbai Zone. Srimati Sampa Biswas, Zonal Manager, Raigad Zone. Next, we would like to welcome our DGM Nakula Behra sir. Next, we would like to welcome the leaders of Esteriors, Shri Shekhar Khadam, ex-General Secretary. Shri Sunil Sushilan, ex-President.
Thank you, everyone. If any dignitaries are present in the esteemed gathering today and are missed out, it's unintentional and we convey our apologies. Moving on. A beautiful smile is the best universal welcome. Small cheer and great welcome make a merry feast. We are fortunate to have Sri Sanjay Saviji as the president of our Mumbai and Goa unit. It gives me immense pleasure to invite Sri Sanjay Savi sir to deliver the welcome address. Respected Chairman, Federation of Bank of India Officers Association, Sri Madhusudan ji, President, Comrade Sanjay Das ji, our General Secretary of Federation, Comrade Sunil Kumar ji, and Chairman of our unit, Sri M.D. Tripathi ji, actually MD and CEO, consented to and agreed to come for this meeting, but due to some exigency, he has to attend the meeting at Delhi. So he is leaving today. So he has sent one message to us also, and he will not be able to attend the meeting. Our Executive Director, Shri P.R. Gopal, Rajgopal sir, he is also not well. So he is not also able to attend the meeting. Respected Executive Director Shri Sarudas Gupta ji, Shri Kartikeyan sir, Madam Kalia, CGM HR Shri Patak sir, NBG GM Shri Roy sir, all other CGMs, GMs, DGMs present in the hall, Zonal Manager, Mumbai South Zone Shri Sahani ji, Zonal Manager, Mumbai North Zone, Shri Devra sir, Navi Mumbai Zone, Shri Jadhav sir, Raigad Zone, Madam Champa, DZM, Mumbai North Zone, Shri Ganesh sir, Ashok Satpal, DZM, Mumbai North Zone, Shri Lobo, Raigad Zone, DZM Raigad Zone, leaders of our unit, other units, General Secretary Jharkhand Unit, Shri Sunil Lakraji, Treasurer Jharkhand Unit, Shri Prakash ji, General Secretary Delhi Unit, Shri Pankaj Kapoor ji, Southern Unit, Amarnath ji, Vidarbha Unit, Comrade Mahendra Dhonsal ji, Pune Unit, Shri Madhu ji, President of General Secretary of Odisha Unit, Shri Kamanjit, then MP Unit, Shri Kuldeep, UP Unit, Shri Saurabh ji, Kerala Unit, Shri Sanil Kumar ji, Treasurer of Bihar Unit, Comrade Ganesh Pandey ji, our leaders of yesteryears, respected Shri Shekhar Kadam ji, Comrade Sunil Sushilan ji, Madam Aruna Agnihotri, our President, Vice President, Shri Alton Saldana, and the entire Mumbai and Goa committee, executive committee members. Young, dynamic, and emerging leader in banking industry, my younger brother, our General Secretary, Nilesh Pawar. Namaskar, good morning, and warm welcome. First of all, congratulations to all Bank of Indians for posting profit of rupees 9,988 crores. We also congratulate Ms. Neetat Zari, winning gold medal in Women's World Boxing Championship. We appreciate efforts taken by our
Head Office HR Department in completing transfer and promotion process in time under the leadership of Tata Sir. We have conducted our AGM 58th Annual General Body meeting. It was concluded with support and confidence extended by our members. I thank all my members and also express my sincere thanks to our federation leaders for their support and guidance during our tenure. Comrades, you all are aware that the entire banking industry today is under threat of privatization. If we particularly talk about our bank, we are struggling on two fronts. One, that is the privatization due to our standalone position in this game plan of merger. And the second, we are trying to bring our past glory. That is the main challenge for us now. Unfortunately, this year also, we are not eligible for PLI. The time has come and it is now necessary for us to understand what are the reasons where we are failing. Our efforts, our planning, our product, our infrastructure, our processes, our system, collectively whatever is to be done will be done by these dignitaries present on this dais. But now time has come to think what individually I can contribute. अगर आप देखते होंगे तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ, एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एमडी ऑफिस से एक एडवाइजरीज पब्लिश होती है. 1 जून की एक एडवाइजरी आई है. कैप्शन ऑफ दैट एडवाइजरी इज दैट इट वाज reshaping of future, and the mission which is given in this PLI for all. तो आप जानते ही है, I can call all these dignitaries as the leaders. They are not the manager or the management. अगर one word में अगर definition manager की कहनी है, तो what will be the definition? Manager who says go, and the leader who says let us go. आप देखेंगे तो सभी dignitaries on the dais, they are all leaders. If you see the management, they are on the field through customer outreach programs, customer meets, SME meet, या तो zonal visits, NBG visits. If you see our leaders, they are the now leader to the banking industry. They are leading banking industry and they are taking care of our against the privatization. Whatever can be done, they are doing. They are always on the street through demonstrations. They are reaching to the people through media. Daily, if you see, they are posting their posts on the Twitter handle, Facebook. तो आज ये टाइम है कि हमको सभी को ये सोचना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. सिर्फ टारगेट और बजट देने से नहीं होगा. Everybody has to contribute. हम लोग बोलते हैं कि together we can and together we will. अभी तो बोलना है कि individual I can, individual I will. Individually I will. I will not take much time. Thank you, comrades. Our unity is Zindabad. Bank of India Officers Association Zindabad. Our unity is Zindabad. Bank of India Zindabad. Thank you, comrades. Thank you, sir, for your cordial welcome. We feel honored to have with us Shri S.K. Roy, sir, General Manager, NBG West 1, with us today.
I now request Shri S.K. Roy sir to address the gathering. Respected Executive Director Sandas, Dasgupta Sahab, Madam Monica Kalia and Kartikeyan Sahab, beloved comrades Sunil Da, Sanjay Da, Mr. Save, Mr. Madhusudan and Mr. Tripathi, my friend and respected Chief General Manager HR, Mr. Ashok Pathak, respected General Managers from Head Office, Mr. Ingle and Mr. Padi, my colleague Zonal Managers, Mr. Deora, Mr. Sani, Mr. Anil and Mrs. Sampa, my colleague Deputy General Managers who are present here, and my dear friends. To be very candid, I am a bit nervous to stand before such a large gathering and being asked to address. It's a matter of privilege for me to be part of this August function and August meeting. Bank of India, having a rich legacy of 116 years, has traversed a long road, but the journey has not been smooth all the time. It was rather interspersed with ups and downs, and here played a vital role our Bank of India Officers Association, who in all difficult times extended support, rock solid support, and guided the bank out of any crisis. During the last 30 years or so, old-timers like us who have seen the bank, the banking industry going through a transformation, a radical transformation, through which the industry came to a stage where we have to face stiff competition for our existence, for the individual banks to exist. And similarly, during the last 30 years, it is heartening to note that Bank of India Officers Association has adapted itself beautifully, and through this adaptation, Bank of India Officers Association has extended all kind of support to the management, and whenever there was difficult times. And the last such example was the period when we went into PCA. During the PCA time, our management and Bank of India Officers Association worked closely, and that has resulted into Bank of India coming out of PCA in the quickest possible time. Such a relationship of mutual respect and mutual understanding. I can tell you I have been a direct beneficiary and witness of such a mutually respected relationship. In my earlier assignment in Chennai zone, we had Mr. Amarnath is here. We had very cordial relationship between zonal management and the association's southern unit,
and which was one of the reasons for the good performance of the zone during the last 2 years. During my present assignment in NBG West 1, right at the beginning, we struck the right chord with Mr. Nilesh, and I am extremely hopeful that we will have a very smooth journey, and Bank of India and NBG West 1 will have a stellar performance during the time to come. With these few words, I extend my good wishes to Bank of India Officers Association and good wishes for this 50th annual general meeting, and thank you for being here with all of us. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. I take immense pleasure to welcome our respected ED, Shri Swarup Gupta, sir, to address us. मंच पे आसीन मेरे दो साथी राजगोपाल जी और मोनिका, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दास साहब नहीं आ पाए, किसी विशेष कारण से दिल्ली जाना पड़ रहा है। कार्तिकेय साहब को भी जाना है, उनकी फ्लाइट की टिकट भी प्रीपोन हुई है, और राजगोपाल साहब शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उसके लिए मैं उन दोनों की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। उनकी भी काफ़ी इच्छा थी आने के लिए, बट किसी कारणवश नहीं आ पाए। और सर्वप्रथम और मंच पे आसीन सुनील कुमार जी, सावेर जी, नीलेश, मधुसूदन जी, संजय दास जी, त्रिपाठी जी, सभी के साथ मैंने काम किया है। और उस तरफ मुस्कुराते हुए पाठक जी और हमारे सुब्रत जी, मैं बैठ के देख रहा था, काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर पे आया, तो सबसे ज़्यादा तालियां आपने जब पाठक आए तभी। उस पाठक आने पे आपने सुनील कुमार जी से भी ज़्यादा तालियां बजाई। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने ऑब्जर्व किया इसीलिए पता है। और मंच के उस तरफ बैठे हुए मेरे बाकी साथीगण, नवी मुंबई जोन, उसके बाद हमारे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इंग्लिश जी, पाड़ी जी तो काफ़ी डरे सहमे से बैठे हैं, क्योंकि लोगों को आईटी में बड़ी तकलीफ हुई थी और दिया गया है। वो लोगों से मतलब रूबरू नहीं हो रहे हैं कि लोगों ने अगर दुख दर्द बयान करना चालू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। और राजेश राम ने सबसे अच्छा काम किया कि वो आया ही नहीं। तो मैं आप लोगों को जो दिक्कतें हुई इस समय में, जब हम लोग सबसे सर्वप्रथम तो 2 साल हम लोग कोरोना के कारण काफ़ी ग्रसित रहे, हमने अपने 146 साथी खोए, और उनके लिए मैं सच में काफ़ी, हम लोगों को भी दुख हुआ। जो कुछ हम लोगों से बन पड़ा हमने किया, एसोसिएशन से बन पड़ा एसोसिएशन ने किया, नीलेश ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया, बट जो होने को मंजूर था, हम यही सोच सकते हैं कि हमने कैजुअलिटी को मिनिमाइज़ किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो साथी हमने खोए हैं, उनके रिश्तेदार या उनको कोई भी कार्य का अगर निष्पादन करने में उनको ज़रूरत है आपकी, तो उनका सहयोग करें, सम्मान करें, क्योंकि हमारे साथी थे, आज नहीं हैं हमारे साथ। और बैंकर्स कम्युनिटी को जब फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया गया है, तो कार्य निष्पादन करते हुए उन्होंने अपना जो बहुमूल्य जीवन है वो खोया है। तो उन सभी को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन के अपनी विचार को अर्पित करता हूँ, हमेशा हमारे दिल में रहें। उसके बाद मैं आता हूँ कि तीसरा वेव चला गया, चौथा वेव हल्का हल्का दस्तक दे रहा है, तो मैं भी जेब में मास्क रख के लाया था, मगर यहाँ जब मैंने देखा किसी ने नहीं पहना इंगले को छोड़ के, तो मैंने उतार के जेब में रख लिया। अब इंगले और पाड़ी क्यों मास्क पहन के बैठे, उसका कारण मैं उनसे बाद में पूछूंगा। इंगले और हमारे राजलक्ष्मी जी, एक्चुअली हम पाड़ी जी को ये बताना चाहते थे, वो भी अगर बड़ा मास्क पहन के आराम से फ्रीली बैठ सकते थे, मगर उन्होंने साहस दिखाया और मास्क उतार के बैठे।
तो हम लोग अलग अलग जगह जाते रहते हैं। लास्ट हम पटना में गए थे, सुनील जी ने भी वहाँ पे आए थे। और हर जगह मैं जब जाता हूँ तो काफ़ी लोग मतलब काफ़ी एनर्जी के साथ एकत्र होते हैं। कलकत्ता में संजय दास जी ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, उधर भी मैं गया। तो हर जगह मैं जब जाता हूँ तो लोग बड़े जोश से और काफ़ी पूरा हॉल भरा रहता है। तो मैं जब आ रहा था तो बॉम्बे के जो लोग रहते हैं थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि भीड़ कम होती है। तो मुझे यही चिंता थी कि ये नीलेश का सामर्थ्य देखना है कि हॉल भरा है कि नहीं भरा। तब जब मैं देख रहा हूँ कि पूरे हॉल में जब एक्स्ट्रा चेयर लगाए गए हैं, अब उनसे बाद में हम पूछेंगे, क्योंकि जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो आधे हमारे लोग रहते हैं, आधे कस्टमर रहते हैं। तो इसमें से कितने कॉलेज वाले हैं और कितने इधर उधर से बुलाए गए हैं, तो रजिस्टर चेक करने पे ही पता चलेगा, लाइटर में न पाए। बट ये जो सब आप लोग अपने व्यस्त समय से निकाल करके यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, तो यह दर्शाता है कि आप लोगों के अपने लीडरशिप में काफ़ी विश्वास है और ये विश्वास को उन्होंने अर्जित किया है। इसके कारण बहुत कम उम्र में वो अपने जो पैशन को फॉलो कर रहे हैं और सुनील जी के पद को उन्होंने ग्रहण किया है। तो उनको सभी मतलब अपनी तरफ से, बैंक की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज फेडरेशन ने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि चेयर रख करके उनको जो है दूल्हे के समान जो बैठा दिया है, तो उससे एक ऐसा वो खुश भी लग रहे थे, नर्वस भी लग रहे थे। तो नर्वस इसलिए लग रहे थे कि लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं उनसे, और खुश इसलिए लग रहे थे कि खुशी जताना ही पड़ता है। जब आदमी शादी करने जाता है तो दुखी भी होता है तो उसको खुश तो दिखना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं। तो ये भी उनसे बाद में पूछूंगा कि वो सही में खुश थे या नर्वस थे। तो बीच बीच में आते रहते मेरे पास, तो उनसे पूछ के मुझे इस बात का पता चलेगा। अब मैं मेन मुद्दों पे आता हूँ। बैंक ने विगत 2 वर्षों में काफ़ी शुद्ध लाभ तो कमाया, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे हमको कोई इशू नहीं है, आप सब ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, उसके कारण नेट प्रॉफिट तो हमने बनाया। और मगर आपसे ज़्यादा दुख हमारे दिल में इस बात का है कि इस वर्ष 2-3 बैंक की PLI नहीं दे पाए, मगर हम लोग चाहते हुए भी नहीं दे पाए, क्योंकि जो फॉर्मूला है PLI देने के लिए उसमें 5% से अधिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए विगत वर्षों से। तो इस वर्ष आप सबने कार्य किया, मगर कभी कभी रहता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं मगर फोकस तरीके से नहीं करते, तो मेहनत उतनी रंग नहीं लाई। और आखिरी क्वार्टर में जो हमने फिनाकल 7 से 10 में गए, वो भी एक कारण है कि कुछ दिक्कतें हुई। उसके कारण जितना हम बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते थे या जितना हम लाभ अर्जित करना चाहते थे, वहाँ हमने कुछ न कुछ खोया है। और आप सबने पाठक जी को बहुत बहुत बधाई दी कि आपने 1 अप्रैल को पोस्टिंग भी कर दिया, प्रोसेस भी कर दिया, मगर उस दरमियान में 20-25 दिन, मुझे ऐसा लगता है, मैं सही गलत हो सकता हूँ, थोड़ा मोमेंटम इधर उधर हुआ। तो इस वर्ष भी हम कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, मगर प्रक्रिया में ऐसा मत करिए कि बिजनेस हैम्पर हो। और फिनाकल 7 से 10 में जो भी मेजर इश्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आने वाले समय में आप और बेहतर सिस्टम पाएंगे। बट इस वर्ष हम जब सबसे पहले पटना में गए सुनील कुमार जी के सामने, उनको भी साथी बनाया। इस वर्ष हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि हम सबको PLI देंगे, और उसके लिए मुझे आप सबका साथ लगेगा। तो आप लोग सब साथ देंगे हमारा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो सुब्रत को हम लोग चेन्नई से यहाँ लाए हैं, तो देवसेना तो चेन्नई में अब संभाल लेगी, और हमारे जो बड़े जो जोन है, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद बॉम्बे हो गया, इवन वेस्ट 2 हो गया, वहाँ से हमारे पास लोग, सामर्थ्य, सब कुछ है, मगर हम उतना प्रॉफिट नहीं अर्जित कर पा रहे। तो आने वाले समय में मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, जो उन्होंने चेन्नई में अच्छा कार्य किया उसको यहाँ पे रिप्लिकेट करेंगे। और बैंक को जो भी दरकार है आप सबसे, या हम सब साथ में मिलके चलेंगे। यहाँ पे जो सब हम साथ में बैठे हैं, अगर हम प्रथम दिन से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 1st क्वार्टर में भी हम कुछ अच्छा लाभ अर्जित करें, तो हम 1st क्वार्टर से पर क्वार्टर हमको मिनिमम 3000 करोड़ करके चलना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
और अगर कहीं कम होता है तो अगले महीने उसको अगले क्वार्टर में कवर करना। तो हम ये प्रण लें कि पहले 3 क्वार्टर में ही हम इतना अर्जित कर लें कि जो चौथे क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो वो 15% से अधिक हो, तो हम आपको PLI दे पाएंगे। और उससे आपसे भी ज़्यादा खुशी हमारे को होगी, क्योंकि हमने बाकी सारे पैरामीटर्स में लगभग कवर कर लिया है। एक कॉस्ट टू इनकम रेशो और थोड़ा निम और ये जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, अगर हम अपना बिजनेस वॉल्यूम छोटे सेगमेंट में बढ़ाएंगे, रैम सेगमेंट में, तो ज़रूर अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग जब संडे को आके मीटिंग अटेंड कर सकते हो, आप लोगों में सामर्थ्य है, ताकत है, तो आप सबसे यही अपेक्षा करूँगा हम सब साथ मिल के इस वर्ष पूरा दिलो जान लगा के काम करेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। रही बात बीच में सावे जी ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन, वो सब सोचेंगे नहीं। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे ना तो कोई आपको छू नहीं सकता। इसीलिए हम अपने आप को अगर सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे तो कोई भी हाथ लगाने के पहले 4 बार सोचेगा। तो हमारे पास अगर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग की है तो हम कार्य में भी वर्ल्ड चैंपियन बनने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वही सही ट्रिब्यूट होगा जरीन के लिए। और पाठक ने अभी उनको एक प्रमोशन भी दिया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और बैंक का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को आने वाला वर्ष के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं। और इतने अच्छे तरीके से जो 50वां AGM अरेंज किया है उसके लिए जो पूरी टीम ने कार्य किया है। नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ब्लू शर्ट पहन के आना है। ब्लू वैसे मेरा फेवरेट कलर है, मेरे पास शर्ट भी थी मगर इन्होंने बताया नहीं है, सीक्रेट रखा। ब्लू हाफ शर्ट भी है मेरे पास, मैं जरूर पहन के आता। तो उसके लिए तो मैं बाद में इनका मतलब इसका जानकारी लूँगा कि आधी इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोग सब आतुर होंगे सुनील जी को सुनने के लिए। तो सोच रहे हैं ये कितना समय ले रहा है, तो इसीलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ। Thank you, sir, for sharing your valuable views and thoughts with us. As some of our executives had to leave early, we were unable to felicitate few of our dignitaries who are present off the dais. So now we would like to continue welcoming the dignitaries of the dais by presenting them an eco-friendly bouquet. First, we would like to welcome the DGMs present here, Shri Prasann Kumar, sir. Shri Vinayak Shukla, sir. Shri Rajesh Upadhyay, sir. Next, we would like to welcome the DZMs present here. Shri Ashok Sakpal, sir, Mumbai North Zone Recovery. Shri Ganesh Ramachandran, sir, Mumbai North Zone DZM.
Shri Rajiv Sinha Sir, MTI Principal. Shri John Lobo Sir, Deputy Zonal Manager, Raigad Zone. Shri Arvind Kumar Sir, Navi Mumbai DZM Recovery. Shri Vinit Srivastav Sir. Next, we would like to welcome our ex-VP, Comrade Aruna Agnihotri. Thank you, everyone. I once again welcome you all to this esteemed gathering. Now, I'm glad to invite Shri Ashok Pathak Sir, Chief General Manager, HR, to speak a few words. Respected DD Sri Sutta Sir, respected DD Madam Monica Kalia, respected DD Sri Kartikeya Sir, all the Galaxy Earth leaders. Yeah, deliberately I will miss the order. So, Comrade Sunil Kumar ji, big round of applause for him. Comrade Sanjay Dasta, Chairman Mumbai and Goa Unit CMD Tripathi Sahab, Comrade Nilesh, Comrade Sanjay Sahab, General Manager Government Office, Sri Padi Sahab, Rajesh, all the zonal managers, Devra Sahab, Sundarya, Anil, Shamba Madam, Rajiv, colleagues from my department, Farm Office, Nakul and Adi Madam, all the AGMs, DZMs, and office bearers who have come from all across all the units in India. Very warm good afternoon to all of you. So we, after I can say very humorous and hilarious speech from Ras Gupta sir, it is difficult to speak after that, and that too after you are expecting कि okay अभी बाद में सुनील साहब को सुनना है. और आई स्टार्ट फ्रॉम वो जो साहब ने ड्रेस की बात की थी ना, तो पिछली बार जो है मैं अभी सुबह जब आना था इस फंक्शन में, तो मैंने पिछले साल की वो फोटोग्राफ्स देखी थी कि यार किस तरह की फोटोग्राफ्स है, तो मैंने ढूंढ करके उस कलर की शर्ट निकाली, मिलती जुलती हुई तो
तो पता चला यहाँ इस बार नीलेश ने जो है गुगली मार दी। यस चेंज द कलर। एसोसिएशन वाले अक्सर कलर बदलते रहते हैं। लेकिन अपनी बात सबसे जो रिमार्केबल सॉरी सबसे रिमार्केबल चीज है, नीलेश ने अब की बार जो है सुनील जी को भी नहीं बताया। So I think only we are out of sync. एक दिन अभी कुछ इशू था जो है मैं ओके, तो we are really it was not it was little serious issue. तो सुनील साहब का फोन आया जो है, बोले कि बॉस ऐसा है कि ये करना पड़ रहा है, हम some issue जो है it was all official, ये करना पड़ रहा है, I am feeling bad about it. तो मैंने उनसे कहा चलिए दोनों लोग मिलके हिमालय की ओर चलते हैं। Many times, I mean, we don't, I mean, all of you may not appreciate okay, what kind of, because it is important how the message goes down the line and what kind of balancing act has to be done both by association and management. It's not so easy. It's really many times very taxing. So on this note, and secondly, I mean, बोलने के लिए कहा गया, एक मतलब बाकी सबके लिए तो फील फ्री है, मेरे लिए जो है ये एक तरफ तो मेरे बॉसेस बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ एसोसिएशन वाले बैठे हुए हैं। So I have to, I will treat in a very narrow by lane, और पतली गली से करके मैं निकलने की कोशिश करूँगा। Okay, coming back to, I think today's day, it is a very pious day, 5th June World Environment Day. And the way we have been welcomed, I think nothing could be more better way to celebrate this day when we have all the people who have been welcomed with this airplane. So on this note, I will start with, okay, many things have been told. I mean, लास्ट ईयर मैंने नीलेश से एक रिक्वेस्ट किया था, एंड आई थिंक दैट रिक्वेस्ट स्टिल कंटिन्यूज, कि दिस इज वन अपॉर्चुनिटी इन एजीएम मीटिंग्स, वी आर लुक फॉरवर्ड टू इट, वी लुक फॉरवर्ड वेयर आई मीन सो मेनी पीपल गैदर टुगेदर, एंड इट शुड बी टेकन एज ए फोरम टू एक्सचेंज आइडियाज, मे बी कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज, कुछ चीज़ें हम नहीं लेकर के जाएं इन फोरम से, rather than okay वही mundane या run of the mill चीजें करने के। And I requested नीलेश कि why don't we do कि जितनी हमारे यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स एक पर्टिकुलर थीम पे एजेंट्स करें रिलेटेड टू बैंकिंग ओनली में भी, और उसमें एक प्रॉपर डिबेट या डिस्कशन या कुछ व्यू पॉइंट्स इमर्ज हो, सो दैट एंड in time to come that those ideas may be used for deciding strategic imperatives for the bank. So my request still continues, so maybe over a period of time. So coming back to this stage, okay, recently I mean I was reading, I mean Davos में अभी मीटिंग हुई है, and वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया था। So World Risk Report में missed, there were 5 areas which they told you, okay, what are the biggest risks being faced at the world level, world forum जो है। I am telling because it has some relevance to our functioning, I mean for our sector also. So the biggest risk was, I mean, taken, it is a climate risk. The biggest risk which was, I mean, considered through a survey of 1,000 thought leaders of the world. Climate risk is the biggest risk which world is facing today. Second was, of course, I mean, the risk of which is generating social cohesion का risk जो आ रहा है due to inequality. It a lot of inequality is getting generated in the world, and it is a worldwide phenomenon. It's not limited to India. That's another risk which is coming. Third was livelihood risk, and fourth was, I mean, the mental health issue. So it has come to a level where mental health issue is now the biggest risk being faced by the world. And fifth was
which is again very relevant for any organization like us is they not, where organizations are not able to manage the digital transformation. So these are the 5 areas which the biggest risk which that report has. Again, coming back to banking and particularly if you take climate risk, probably today it is not being talked about, but in time to come, next 2, 3 years, 4 years, 5 years, many of our lending and other decisions are going to be mandated by what kind of climate risk we are generating and how we are managing this climate risk. So that probably, these are the forums when we start thinking, or maybe we can provoke some thoughts in people where they start thinking, okay, how in time to come, how they are going to manage the challenges which world is facing, or humanity as a whole is going to face. And we help each other just to come out of this problem, and that is where the organization, Officers Association or other things plays very important role. They are supposed to play very important role. There is a very somber thing I have been noticing through data, through the request whatever is coming to us. And a famous YouTuber, led with Lily Singh, she has written there that she realized at one point of time, okay, she is going into depression and all that. And then for 7 months, she deliberately went into what is called digital detox. 7 महीने के लिए उसने पूरा अपने सारे अपने फोन सेट से सारे जितने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे सब डिलीट कर दिए. And the way she told कि the biggest realization I had after 7 months is that internet is a tool which should be used rather than internet using you. And that's the biggest finding realization she had. So what the way I am trying to have, what are the rules to navigate in that world, probably हम भूल गए या डिफाइन ही नहीं हुए. वो बिल्कुल इसी की तरह है जैसे कोई एस्ट्रोनॉट जब जाता है जीरो ग्रेविटी में, जो फिजिकल वर्ल्ड में अगर उसका बैलेंस लीजिए तो जीरो ग्रेविटी से अचानक उसको इस ग्रेविटी में, तो उसको हाथ पैर उसको हिलाना मुश्किल होता है. या अगर हम जो है एब्जॉर्ब्स यू ऑल द वहाँ होकर के सोचते हैं कि पूरा सिस्टम आपको गलत कर रहा है, यू आर राइट, एंड सब तरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत या फरार. So all of us had to complain. And from that victimhood, they try to justify all their ugly actions. So my request, my appeal to maybe PLIS and other things we are going to leave it behind. So again, करना हमें को है, हमें लोगों को करना है, ठीक है. So and I would like to end my speech with again भगवद गीता का वो श्लोक है, प्राप्स्यते नहीं सॉरी ओके आई विल कम टू द मीनिंग, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो है, और अगर हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे. अगर यहाँ पे इस around a beautiful combination of promotion process, transfer process, well within the time. Most of the organizations are not able to do that. We and Bank of India, through the efforts of Mr. Pathak and HR team, has been doing that consistently. Probably this is the third year, this is the second year it has been happening, and hopefully once such standard has been set, it's going to happen all the time, all the years through. My zone managers of Mumbai, Navi Mumbai, South and North, and Raigad, deputy zone managers, various general secretaries from various organizations who have come here. Initially, I thought this is an all India convention. After that, I went through the annual report, it is Bombay and Goa. So if Bombay and Goa, we are not used to that menus. Completely all of us are through this system. So in various menus, it's going to be difficult. But the standards of 10, I think I compliment the IT team, because once we are used to it, there are so many pluses which is going to happen in 10.
But till that, friends, yes, interest income, we were not able to do that well, but I understand under leadership of Mr. Ingle, Mr. Singh and Mr. Nitin, lot of good works. All the RBC heads, all the SKVK heads, all the MSME heads, beautifully trained, all combined strategies given. What is the lead generation? This team, either Bombay, Goa, succeeds, Bank of India succeeds. There is no second thought. You would have heard 100 times, many times about this, but we want this team to succeed. And this standing instruction दिया, जब standing instructions जाता है महीने में 40 रुपए मिलता है बैंक को. Easy source of revenue. It has to be reached. We have 10.65 crore customers with us. Are we able to reach? Very few penetrations. Very 5% penetration only is happening. And net banking, we are, and unfortunately, that is not even very aggressive. It's only 85 lakh account holders. Am I right, Mr. Pai? 85 lakh account holders only internet. And this center, Bombay and Goa, with so many people here, if we take it on ourselves to see that all of our customers, at least the ones which are having average balance of 5,000 and above, they should have these internet facilities to do this. And similarly, for RBI relief bonds, 0.3%, whenever any transaction is happening through RBI for RBI relief bonds, I don't know how many of you have contributed to that. The interest rate is high, 7.15%. I understand that among all our government-sponsored schemes, Sukanya Samriddhi scheme interest rate is 7.6%. Even I think our own interest rate, staff rate is not that much, and we get tax benefits. So these are simple tools available with us, and large number of people having accounts with average balance of more than 5,000 is in this center. That's why I thought I will share these views, because whether it is third-party product, whether it is government business service branch, if this center is able to generate 50% of the income in non-interest income and third-party income, I think bank definitely will be able to reach those targeted non-interest income and third-party income of 325 crores and 250 crores respectively. This center has a large role to play. I think whenever the functions, the various activities undertaken under the leadership of Mr. Nilesh and Sunil have been very successfully doing, whether it is blood donation camp or a tree plantation or some message to be given to the field level functionaries, is one. I'm seeing that aggressiveness in the team of office bearers who have been assembled here, and the way in which the function is also being conducted very meticulously. And that shows that when the comrades are able to show such a disciplined way of functioning, I think all our comrades who are assembled here, I see no reason they will put that extra effort and see that, as Mr. Das Gupta was saying, 3,000 crores every quarter for 12,000 crores has to come. If this center contributes about 40 to 50%, if it comes from this center, I think easily all other centers from the other parts of the country will be able to do this. So I thank these organizations for giving me a beautiful opportunity and address my concerns to you guys. Best wishes, a beautiful days to come, and I'm sure with all the efforts, as Madam Leena and Mr. Save was saying, the persons who are sitting, each and every person here sitting in this auditorium and across the country, up to 53,000 employees, did play a role in shaping a beautiful net profit of 3,405 crores last year. Round of applause for that. And if we all have to do this collectively, I am sure we will all going to do it. We have to reach this 12,000 crores, and in advance, a round of applause for that. Thank you. I wholeheartedly thank you, sir, for your words of appreciation and for sharing your views with us. I'm now delighted to invite the chairman of our unit, Shri M.B. Tripathi, sir, to share a few words and guide us with his experience.
respected president of our unit and of this function, Comrade Sanjay Save, our Federation's beloved Chairman B. Madhusudana, President Sanjay Das ji, and leader of leaders, and our General Secretary of our Federation, Comrade Sunil Kumar, our beloved ED, Swarup Das Gupta ji, in absentia, कार्तिकेयन जी, आई वुड लाइक टू कॉल हिम कॉमरेड कार्तिकेयन। बार बार उन्होंने आप सबको कॉमरेड्स करके बुलाया और आप सबकी पीड़ाएं, आप लोग के दर्द जो उन्होंने बांटा, इसलिए डेफिनेटली कॉमरेड कार्तिकेयन जी, मैडम मोनिका कालिया जी, हमारे बैंक हमारा बुरे दौर से गुजर रहा था। जब बैंक रेड में चला गया था, उस समय जब पीसीए का दौर था, उस समय सुनील कुमार जी तबियत स्वास्थ्य पर काफी चिंताजनक थी, काफी नहीं तो बीमार चल रही। इसके बावजूद उन्होंने सभी चीजों को दूर रखते हुए खुद स्वतः मुंबई आए और उन्होंने साइन किया। मेमोरेंडम साइन करना था, उन्होंने अपने पर्सनल हित को अलग रख दिया। तो हमारी फेडरेशन हमेशा बैंक मैनेजमेंट के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के चली है। और सर, मजाक में ही हमारे पाठक जी ने कहा कि एसोसिएशन रंग बदलती है। तो सर, भले ये मजाक था, लेकिन मैं कहूंगा कि एसोसिएशन रंग, अगर एसोसिएशन रंग बदला है तो बैंक के हितों के लिए बदला है, या तो अपने मेंबर की रक्षा के लिए, उनके हितों को बचाने के लिए, उनके हितों के लिए बदला है। और ये हमारी मजबूरी रही है, ये हमारी बाध्यता रही है। सुनील कुमार जी ने अगर आंदोलन का ऐलान किया, अगर हम रास्ते पे भी उतरे, हम आंदोलन भी किए हैं, तो साथ ही साथ जब बैंक के ऊपर कोई भी मुसीबत आई है तो हमने, हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू रेस्पेक्ट जिनके उनका विरोध रहता था, इसके बावजूद उनके विरोध को बरकरार करते हुए हमने बैंकों के हितों के लिए हमेशा बैंक के मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और आज इसका नतीजा है कि आज हमने इतनी बड़ी प्रॉफिट अर्जित की है। तो निश्चित रूप से ये हमारा रंग बदलना बैंक के हित में था। इसको सर यहां जितने सभी माने था, आप भी मानेंगे। और जहां तक हमारे यूनिट का सवाल है, यस, हम हमेशा अपनी जवाबदारी ली है, क्योंकि हम जानते हैं, और ये बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहा जाता है, अगर मुंबई दौड़ेगी तो बैंक ऑफ इंडिया दौड़ेगी। मुंबई जोन, हमारे जो मुंबई यूनिट्स हैं, यहां अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और बैंक ऑफ इंडिया आज में निश्चित रूप से हम दावे से कहते थे, हम ये आश्वासन देते हैं कि आपको जरा भी निराश नहीं करेंगे हमारे कॉमरेड्स, तमाम परेशानियों के बावजूद। जबकि जब हमारा फिनेकल टैंकर हुआ, उसमें हमने ब्रांचेज हम मूव कर रहे थे, घूम रहे थे, 10-10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे हमारे कॉमरेड बैठे ब्रांचेस में काम किए, कस्टमर की गालियां सुने हैं, इसके बावजूद जरा भी हिले नहीं। बैंक के हितों के लिए तन-मन से उन्होंने अपना समर्पण किया था और आज भी करेंगे। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारा जो सपना है बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया उस ऊंचाई को निश्चित छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज आपका नेतृत्व निश्चित रूप से मुझे याद आ रहा है कि जब उस समय लोगों ने कहा था नीलेश के बारे में कि प्लेटर पे दे दिया गया, लेकिन उस प्लेटर पे जो चीज दी गई थी उसकी कीमत नीलेश को पता थी, उस चुनौती को नीलेश जानता था। और आप सभी मानोगे कि पिछले 2 सालों में 2019 के बाद पहले अंदर बाहर अंदर बैंक ऑफ इंडिया के बाहर पहले हमारी मीटिंग हो रही है, और कितने उत्साह के साथ आप कितनी बड़ी संख्या में यहां हाजिर हो। इन 2 सालों में कोरोना पैंडेमिक के काल में हमारे यूनिट ने वैक्सीनेशन हो चाहे ब्लड डोनेशन हो, हर काम व्यवस्थित रूप से किया और हर पूरी तरह से सहयोग किया बैंक को। यही नहीं, इस दौरान हमारे बाकी यूनिट के नेता यहां उपस्थित हैं। कोरोना पीरियड में वे आ नहीं सकते थे, लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं हुई। और कॉमरेड सुनील कुमार के प्रतिबिंब के तौर पर, फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर वो सभी काम किए जो कि फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी का उत्तरदायी होता है। उनके निर्णय के आधार पर, उनके मार्गदर्शन, उन्होंने सभी काम किए। और मैनेजमेंट से एक तरह का एक सेतु के तौर पे मैं कहूंगा, एक ब्रिज के रूप में बाकी के यूनिट्स के सभी कामों का उन्होंने देखा। और यहां निश्चित रूप से जो नेता हैं इस चीज को स्वीकार करके इस चीज को मानेंगे। तो दोस्तों, जहां तक हमारे यूनिट का सवाल है, हमारे
फेडरेशन का सवाल है, आप लोगों को निश्चिंत रहना है कि नहीं, उससे तो पॉकेट में तो फर्क पड़ता ही है, बट यू शुड फील प्राउड दैट देयर इज अ इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन योर नेट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 55%. PLI is linked to it, operating profit year-to-year growth. Operating profit year-to-year growth, it was not there, that's why we couldn't get PLI. And definitely, ambition should be there, hope should be there in our mind, then definitely in the next year, we will get the PLI. For that, we will have to put our best endeavor. वो जो स्लोगन था ना बैंक का, परफॉर्म टू योर पोटेंशियल, ट्रांसफॉर्म टू आउट परफॉर्म. You have transformed to outperform, but you will have to go an extra mile. I am not a student of commerce, but still I can understand that this year definitely we will put our heads together to get the PLI, but at the same time this year some problem will be there, as because CRR is increased, the deposit interest outgo will be more, therefore we will have to go for aggressive interest income, means we will have to go for aggressive financing. This year also our performance in all the parameters, it was very good. But at the same time, we should be very cautious, because in the days to come, lot many fraudsters are there and lot many hurdles are there. But the Bank of Indians, you have proved that whatever may be the hurdles, but we could overcome. Means in transformation from Pinnacle 7 to Pinnacle 10, lot many hurdles were there, still you kept the ball of this Bank of India rolling like anything due to your unlimited spirit. And for that, kudos to all the persons, those who are working in the branches more particularly. Pathak ji, he has touched upon some of the aspect on this risk of mental health, yes. And he has requested our association to conduct the associational meeting on those themes. Yes, sir. I can give you one information. Yes, sir, this mental health, it is the biggest problem as on day to day. When you were discussing on this mental health, something was haunting in my mind. That few days back I was going through an article wherein it was depicted that in Japan, after 40 years, in Japan as on today, in the world, the number of the mental patient is much more in the Japan, because up to the age of the 40, they only concentrate in work only. And after that, when they come back to their own family, they see that his wife is eloped with someone else, his son is drug addicted, and ultimate fate is that they have become the mental patient. That's why we should keep our mind intact, whatever may be your aim. You are to achieve your target and all the things, but at the same time, you have to keep your mind intact, because the mind is the main thing. With this mind, you can make it and you can break it. You can have an hopeless end, and you can have an endless hope with a strong mind. And sir, what I was telling, in our unit, we are going to conduct one workshop on this focus. Because in the world today, the main crisis of as on today, it is the crisis of concentration, attention and the focus. We are losing our focus. And what you are discussing, that is very pertinent. Means this social media,
it is taking our focus away from us. And throughout the globe, we were actually few days back I was, sir, you should read that book, very famous book. Daniel Coleman is a famous philosopher of America. He wrote a book on this focus. In India, due to the inflation, there is the price hike of every commodity is the cheapest available in our country. That is the net, this connectivity. Whatever you are getting, means we are getting 2.5 to 3 GB per day at a cheaper rate. And in other countries, they are getting, with that amount, 6 GB to 7 GB throughout the month. And in our country, it is very cheapest only because of the fact that the average age of our country is 29 to 35. And these Silicon Valley people, they are trying to snatch away our concentration and our focus. I will not discuss on that issue, that is a very vast subject. But to deviate from the focus, we are contributing. We are contributing. Because in our banking also nowadays it has become this social media concentrating only. Nowadays everything has changed. Our house is big, but the members are less. Our income is more, but the happiness is less. Knowledge is big, but the wisdom is less. Lot many friends are there in the social media, but actual friend is very less. Like that, कुछ दिन पहले हम लोग माना करते थे कि ब्रांच में जो लोग काम करते हैं कि उन लोगों को जो ब्रांच का वर्किंग आवर में या कंट्रोलिंग ऑफिस में उस टाइम मूव करो. कुछ दिन पहले मेरे को, मैं सर ये असली कहानी बता रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं. कुछ दिन पहले कुछ लोग मेरा पास आए, वो बोले कि सर देखिए ना, कोई आया, उनका बॉस डिपार्टमेंट में धमकी दिया. अरे क्या है, किसी का काम है ऐसे ऐसे बैठ करके. They are being insisted to use the mobile throughout the working hours, and at the same time, okay, fine, in the controlling office it is okay. Another day, I visited one branch. There I found lot many queues are there. People are not satisfied. But still, when I entered into the branch, I found one lady sitting on the counter. He is using the mobile, and at the same time he is using the surfing or something like that. He says engaged in mobile. मैंने उससे पूछा, अरे इतना लोग खड़े हैं क्यू में, इतना गाली दे रहा है और आप मोबाइल कर रहे हो. बोला सर बीच बीच में इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता है, अगर इंफॉर्मेशन अगर नहीं भेजेंगे तो सर डांट. Then only you can union meeting, otherwise I will be failing to discharge my duties. We are fighting for this, that keeping these banks into the nationalistic, to have its nationalistic character. Yes, the nationalistic bank, the Jayaprakash Narayan, the opponent leader, he told that it is a master stroke in the political sagacity. But the advisor of the government, Subramanian Swamy, he told that it is the greatest blunder. Means just opposite. Though he quit this post afterwards, I always tell to all of you, as on date, hitherto, we have proved ourselves to show the country, to show the world that that was a correct decision by nationalizing the banks. And it is the duty of all of us to keep on continuing our best endeavor so that we can prove that yes, this bank nationalization, it was not a whimsical decision or it was not a political decision, but it was the need of the hour. And at the same time, I can tell you, these reforms, we are not against these reforms.
With the banking trade unions, we are not against these reforms. But whatever the reform, it is happening in our country. They are managing 18, you take it, 18 crores per employee. They are handling 18 crores of business. That is the highest in the industry. Next is Bank of Baroda and next is the State Bank of India, and it is much higher than in comparison to other private banks. Therefore, the Bank of India people, we should have a very good feelings and we should feel a pat on our back. With this hope, without losing much of your time, because already we are running late. Nonetheless, they had their own important issues to take care. That is why they had to leave a little early. And comrades Sunil ji, Nilesh ji, Sanjay Square, and Madhusudan ji, Tripathi ji, and all the Pathak ji, Roy sir, and everybody who is present here off the dais. A very good afternoon to all of you. मुझे काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में खड़ा किया गया है. एक तो 10 से चालू करते हैं परफॉर्मेंस. तो पोटेंशियल क्या है? Who decides what is the potential? And how do I know that this is something which was the potential and I have achieved? So I'll give you a small story on it. ये मैंने बहुत जगह में जहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग्स की हैं मैंने सबको सुनाई है. In fact, I was thinking of deviating from this story today, but nonetheless मुंबई और गोवा में मैं ये स्टोरी नहीं मैंने सुनाई किसी को, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. आपको शायद नई ही लगेगी ये स्टोरी, शायद किसी ने सुनी भी हो. सो आई टेल यू दैट स्टोरी अबाउट पोटेंशियल. बट बिफोर दैट अभी थोड़ा सा संजय जी ने टच किया था कि हमारी एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉयज कमिंग डाउन. करेक्ट? इज इट करेक्ट? एंड इसमें क्या होता है, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी सीनियर टू अस एंड सम पीपल हु आर वेरी जूनियर. तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, है ना. सीनियर्स को कई बार लगता है कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, और जूनियर्स को लगता है कि यार ये तो कंप्यूटर पे इतना आसान सा काम था बटन दबाने का, ये सीनियर क्या कर रहा है यार, इतनी देर से काम नहीं कर पा. हो गया शादी नहीं होगी, अब घर चले हैं. बोला ऐसे कैसे शादी कैंसिल होगी, क्यों, क्या हो गया? ये तो पागल हो गया, वो बोल रहे हैं पीछे झरना बह रहा है, वहाँ उसको दूध का झरना बहा दो. वो नाना जी कहते हैं यार ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्या शादी टूटती है? तो छोटी बात कैसे कर दें हम इसको पूरा, कैसे छोटी बात आप लोग बोल रहे हो? तो कुछ नहीं, आप उनको जाके बोलो दूध का इंतजाम हो गया, पानी खाली कर लो. So this is the experience of two generations which had come together, the out of box thinking which can happen, and the potential which we can achieve. We cannot even imagine what can happen in the bank. So now, coming to this gathering is almost, NB जी कितने हैं हमारे? काउंटिंग कर लेना. हाँ चलो. एनीवेज, अभी इसका मतलब, और ये जो बैठा है यहाँ पे हमारे पास ग्रुप, इसका बिजनेस कितना है? मुंबई गोवा कितना बिजनेस है? लो पाठक जी, न्यूज़पेपर that has come because our provisions were. So when we need to increase the operating profit में आपके अभी ब्रांच में जाके चेक करना, ठीक है, कितना चार्ज करते हैं. और तो होम लोन पे कितना चार्ज करते हो? 6.9. और वो जो एक बेस्ट को कितना चार्ज करते हैं?
ये लार्ज कॉर्पोरेट से कोई बैठा है? क्या करें फिर? अभी आप बताओ, आप ही लोग ने मुझे बताया, मैंने ये फिगर्स नहीं बताई, मैंने आपकी फेस वैल्यू पे ले लिए हैं जो आपने बताया। आपने बोला एमएसएमई को हम 8.5% के अराउंड चार्ज करते हैं, आपने बोला होम लोन पे 690 चार्ज करते हैं, और जो गवर्नमेंट काइंड ऑफ जो बड़ा अकाउंट है मेरे पास, अगर गवर्नमेंट का है या फिर AA, AAA कॉर्पोरेट का है, उसको हम 4.5% चार्ज करें। दिस इज ऑल व्हाट हैज कम फ्रॉम यू। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको, करेक्ट? अब ये इन्फॉर्मेशन के साथ में बताओ किसको लेंड करूं मैं? हाँ, तो ये बिजनेस लीड्स कहां से आएंगी? कहां से आएंगी? एमएसएमई सेक्टर तो बैठा है अपनी जगह पे, कौन जनरेट करेगा ये लीड? अब just go back to your branch and see how many leads your branch has generated in last 2 months. ठीक है? तो जो संजय सर करेंगे, लेकिन PLI करने के लिए हमें करना क्या है? And why your MD is saying, you know, you reshape the future. How the transformation in the organization is happening. We all accept that transformation is necessary. The path there to transform will be easy going forward. And I think I have said enough. आपको थोड़ा क्यों मिल गया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जैसे बहुत सारी चीज़ें कार्तिकेयन जी भी बोल गए, PPF अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, हाउ वी गेट कमीशन ऑन दैट, और इवन द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट distribution, what we do. So in each of that we have a potential to yet improve better, correct? कितनी देर और सुन सकते हो मुझे? उन परमिशन तो श्रोता की लेनी पड़ेगी। अब ये विकल्प की बात बहुत अच्छी है। अब विकल्प की बात ये है कि आप दरवाजा बंद है, आप बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास ये विकल्प है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप कान से सुन के यहाँ तक लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। दैट विकल्प इज स्टिल देयर विद यू। कितने लोग फिजिकली आए हैं? देखो अब उस पे भी हाथ नहीं खड़ा किया तुमने, तो इसका मतलब मेंटली सबके सब एब्सेंट है यहाँ। ऐसा है क्या? हाँ, तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप सिर्फ ये ले लो कि आज शाम को जब मैंने अपना डेस्क बंद किया है बैंक में, आज कौन सी मैंने इनकम बढ़ाई बैंक के लिए या कौन सी कॉस्ट कम की। हम बार बार बोल रहे हैं CIR, कॉस्ट टू इनकम रेशियो की हमें प्रॉब्लम है, और वो क्यों बोल रहे हैं? बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस करते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा एफिशिएंसी से बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं अपनी, करेक्ट? मुद्दा के नाम में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं? एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी तो है, वो बहुत सुनाया आज, मतलब दिल खोल के सुनाया कि आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, यू हैव टू वर्क गेट बेटर। और ये आज की बात नहीं है कि आज ही वो हमें मिले हैं, आज उनसे हम बात कर रहे हैं। हम लोग आई थिंक स्टार 119 जो आपका बहुत चहेता फेसबुक पेज है, वी डू गो देयर, वी डू लुक एट दोज, यू नो, आप लोग को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज ब्रांचेस में अराइज आ रहे हैं, हम डेली वहाँ से उठाते हैं और डेली पाड़ी जी उनका कुछ ना कुछ निदान भी करते हैं। और आई हैड टोल्ड पाड़ी जी कि आप उस पोस्ट पे जाके आप डाल दीजिए कीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन है, सो दैट दिस थिंग्स गेट रिजॉल्व नॉट ऑन दैट पोस्ट। So the department, IT department, has started doing it. But I think before I move any further, I'll just ask you guys to clap for yourself. We had been in a very difficult situation when the, you know, we moved from Pinnacle 7 to Pinnacle 10. There had been lot of operational issues in the branch, and the employees of the branch, the people who were the front desk officers, they have held themselves together very nicely, and
despite to sell it for $2. So number one is for starting anything is accepting that task, taking the ownership. So once you take that ownership, rest is like a story to tell to others. So he took that ownership. Okay, father has given me a task. I should sell it for $2. So said, what can I do? So it has to be made presentable. Correct? Presentable होनी चाहिए तभी तो कोई खरीदेगा. कौन खरीदेगा क्रम्पल? तो सर थोड़ा उसको वॉश कर दिया, आयरन कर दिया. Now it has become very very presentable, a $2 t-shirt. Now he says, okay, let me. What should he decide now? What should he decide now? आप रोज करते हो, डे इन एंड डे आउट ये काम. आपका एक पास में एक कासा प्रोडक्ट आ जाता है, हम आपको दे देते हैं एक सेविंग बैंक प्रोडक्ट. करेक्ट? वो रक्षकता कुछ आ जाता है, कुछ गवर्नमेंट के लिए आ जाता है, कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए आ जाता है. हम आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट दे देते हैं कासा का. नाउ यू गो एंड सेल इट आउट. सेम थिंग, ही हैज गॉट आल्सो वन प्रोडक्ट, अ वाइट टी शर्ट. नाउ गो एंड सेल इट आउट. सो व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग दैट कासा प्रोडक्ट? क्या करते हो उसका? हाँ, किसी ने यूएसपी ये जो बताया ना इन्होंने, सुना आप लोग ने? इन्होंने बोला सारे कस्टमर्स को बताते हैं, उसमें से जिसको पसंद होता है ले लेते हैं. दिस इज अ वे ऑफ वर्किंग, बट दिस इज अ वे ऑफ हार्ड वर्किंग. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज यू डू योर हार्ड वर्क, बट साइमल्टेनियसली यू डू अ स्मार्ट वर्क. कि आप सेम टाइम में उस काम को कैसे ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हो, सो दैट योर बैंक स्टार्ट्स अर्निंग मोर इनकम from the same time and effort that you are spending anyways. So with the same time, somebody said from this side that we find a target customer. Who will be a target customer? So if I go, ये $2 की टी शर्ट लेके अगर मैं कहीं मॉल में बेचने जाऊंगा, कोई नहीं खरीदेगा. Nobody has come to a mall to buy this cheap. और ये $2 की चीप टी शर्ट को खरीदने के लिए मेरा मार्केट क्लाइंटेल वुड बी डिफरेंट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आप एक सिर्फ सेविंग बैंक प्रोडक्ट है, वो सेविंग बैंक प्रोडक्ट को एक अकाउंट खोलना है तो आपका टारगेट क्या है? वॉक इन ऑडियंस, वॉक इन कस्टमर भी आपका टारगेट है. करेक्ट? लेकिन अगर हम कहेंगे कि वो 100 खोलने हैं, तो विल यू स्टिल स्टे इन द ब्रांच टू फाइंड योर कस्टमर? सो आपको वो कुछ डिफरेंट ढूंढना पड़ेगा. सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो दिस स्मॉल चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड, 12-year-old child, that I need to find a target audience for it. So where can I find a target audience? Where people like to buy cheap products. For example, he stood outside near the traffic lights where some people keep on showing you something and you sometimes buy that product. Went there, sold it for $2, mission achieved, came back. Now अब father जो थे वो थोड़े से वो सुब्रत रॉय के जैसे थे. वो बोले कर आए हो ना, ठीक है, ये तो $2 की थी, अभी इससे काम नहीं चलेगा यार, ये इससे कैसे टारगेट अचीव होंगे. लोग के साथ ऐसा कुछ, हाँ, अभी नहीं शुरू किया. जोनल हेड जादव साहब तो हैं, पिछली बार भी थे यहाँ पे, वो सानी साहब भी बैठे हैं. ऐसा कुछ करते हैं आप लोग के साथ कि नहीं? नहीं करते तो आई लव टू पुल देयर इयर्स, व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट. करते हैं कि नहीं? और उसके फादर ने बोला $20 की इसको बेच के आओ. ये 2 वाला तो बहुत आसान काम था, एक अकाउंट खोलना तो बहुत आसान काम था ना, अभी ब्रांच में बैठे बैठे हो गया काम, तो इससे काम नहीं चलेगा, 20 की बेच के आओ. फिर से एक गंदी सी टी शर्ट दे दी, डर्टी क्रम्पल टी शर्ट. नाउ व्हाट टू डू विद इट? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा अपना जो सर्कल है वो थोड़ा एनहांस करना पड़ता है ना. आई कुड अचीव दैट first objective, smaller objective with my own potential, but if my target is little bigger, I need to take the benefit of whatever resources I have. और हम लोग के पास कुछ resources हैं क्या बैंक ऑफ इंडिया में? अगर ये एक अकाउंट से 100 अकाउंट पे जाना है तो क्या क्या resources हैं? और
कॉर्पोरेट क्लाइंट कहाँ होते हैं? ब्रांच में होते हैं। किसकी ब्रांच में होते हैं? हाँ, salary account for your customer. Yes. So you have to collate all that information, put it together, then you will be able to achieve that bigger target. So how do you do it? Somebody has said कि my corporate clients जो हैं हम उनके यहाँ जाके salary account खोल सकते हैं। हम लोग भी पिछली बार से पिछले 1 साल से 2 साल से ये बात बोल रहे हैं कि क्रॉस सेल करो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेल। एक प्रोडक्ट है, आपको पता है HDFC बैंक में एक कस्टमर के पास में 5 प्रोडक्ट्स हैं। हमारे बैंक में कितने हैं? हमारे बैंक में 1.25 हैं। तो हमारा पोटेंशियल कहाँ है? ठीक है, तो पोटेंशियल अभी और है ग्रो करने का हमारे पास में। नाउ दिस $20, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नाउ यू हैव टू कोलेट योर रिसोर्सेज। लाइक यू से कि एक कासा प्रोडक्ट जब हम आपको देते हैं, आप बोलते हो नहीं इसके साथ में आप कुछ एक बंडल अप कर दो कि रिटेल प्रोडक्ट भी इसको देने जाएं तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस माफ कर दो, उस पर गारंटर मत मांगो। ऐसा कुछ करते हैं? होता है? वो बैठे हमारे रिटेल वाले करके देते हो कुछ ऐसा पैकेज प्रोडक्ट? वो बोल रहे हैं देते हैं क्या? मिला आप लोग को कभी? मिला नहीं मिला? थोड़ा सा हमने कभी कभी वो इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस भी करा के दे देते हैं। सेविंग बैंक कस्टमर जो इतने सारे स्कीम के अंडर आएंगे, दे विल हैव इंश्योरेंस फ्री। होता है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बैंक के पास? हाँ, तो हमको अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट? सो इफ यू डू नॉट नो योर रिसोर्सेज, गो बैक, गेट टू नो योर रिसोर्सेज। आपकी ब्रांच में डिपॉजिट एक बंदा देखता है, आपकी ब्रांच में क्रेडिट दूसरा बंदा देखता है, ऑपरेशन तीसरा बंदा देखता है। हर सैटरडे को बैठो, एक सिर्फ डिस्कशन करो फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स में क्या नया है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में क्या नया सर्कुलर आया है, या कौन सा क्या है जो हम ब्रांच में नहीं कर रहे हैं। सो कोलेट ऑल योर रिसोर्सेज टुगेदर। सो स्टोरी पे वापस जाएं या बैंक में ही चलें? स्टोरी कहाँ थे हम? स्टोरी में $20 बेचने जाना था उसको। फिर से वही काम। देन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नीड्स टू बी एनहांस्ड। Like we are talking about, we put some more, retail product into it, waive off the processing charges, waive off the, guarantors for it, or, we give some insurance free to them along with that. So we are trying to increase the value of the same product. Same SB product, we have increased the value. So he also tried to increase the value. तो अब क्या करें? तो अपने रिसोर्सेज पूल करने पे, उसको नहीं आता था करना, बट उसने अपने रिसोर्सेज पूल किए, अपने किसी फ्रेंड को बोला इस पे कुछ कार्टून कैरेक्टर बना दो, दैट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ दिस टी शर्ट। नाउ व्हाट विल हैपन टू माय मार्केट प्लेस? वो सेम जगह पे जाएगा, ट्रैफिक लाइट पे, तो बिक जाएगा क्या $20 का? तो मार्केट प्लेस बदलना पड़ेगा। लाइक समबडी सेड कि मेरे को अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा, या जो मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स नहीं भी हैं उनके पास भी हम जा सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ different product which has a better value than a standalone product. Correct? Now he went, दो कार्टून कैरेक्टर बनवा के, अब क्या उसके पास राइट एप्रोप्रिएट, उसने सोचा क्या मेरा मार्केट प्लेस होना चाहिए। सो ही वेंट आउट एंड स्टूड बिफोर अ स्कूल जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कार्टून कैरेक्टर्स पसंद होते हैं। अब किस टाइम पे जाए स्कूल? वो 8 से 2 अगर स्कूल चल रहा है और 11 बजे जाके खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो एग्रीकल्चर की रिकवरी करने कब जाना पड़ेगा? हाँ, तो टाइमिंग ऑल्सो मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचना है तो अगर फरवरी और मार्च में मैंने अगर जमा के नहीं बेचा, जब सबको अपना टैक्स रैशनलाइज करना है, तो आगे मुश्किल होने वाली है। और अगर मैंने एजुकेशन लोन अभी नहीं बेचा तो आगे नहीं बिकने वाला है वो एजुकेशन लोन। सो योर टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद योर मार्केट प्लेस। सो नाउ दिस, ये एक वो पेप्सी ने ऐड निकाली थी ना, क्या थी वो? वी ऑल लाइक दैट ऐड वेरी मच। आप लोग को भी ऐसे लगता है ना घर में, है ना? वो बेटा 80% मार्क्स लेके आता है या बेटी 85% मार्क्स लेके आती है, तो क्या होता है फिर?
दिल मांगे, तो हमारा भी दिल मांगे मोर होता है. बट इट्स नॉट इरैशनल वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम. व्हाई वी आर सेइंग दैट दिल मांगे मोर? बिकॉज दैट इज फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये दिल मांगे मोर में हम उनको बोलते हैं अभी ये 20 से नहीं चलेगा, अभी 200 की चाहिए. ये $200 की बेच के आओ. Now what should we do to do that? What should we do to do that? We need to have. अच्छा मैं ये बताती हूँ आपको, स्टोरी बताती हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे उसको बैंक से रिलेट करके बताना, ठीक है? अभी मैं पहले बैंक को रिलेट कर रही थी, then I was going to the story. Let me do the reverse now. I'll tell you what this boy did and then you tell me इसको बैंक से कैसे रिलेट करेंगे. अब इस लड़के ने क्या किया, वो एक तो वो ओनरशिप तो उसने लेनी सीख ली थी, जो भी उसको देते तो ओनरशिप ले लेता था. दूसरा ही स्टार्टेड पुलिंग आउट द रिसोर्सेज. एंड तीसरा एक वो शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, ओम शांति ओम. अरे कौन है भाई, कौन शाहरुख खान हमारे यहाँ? एक लड़की की आवाज आई मुझे, कौन था? हाँ, स्टैंड अप एंड टेल ना. Absolutely correct. She has not missed out a word. Big Shahrukh Khan fan. एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं हुआ उसका. बट क्या है इसका, वो अंग्रेजी क्या हुआ करता था, यू नो, इफ यू कौन है, लड़कियां बड़ी इंटेलिजेंट है यार. कौन बोला एल्केमिस्ट? मैडम बोली थी ना. The woman power is very great in our bank. So the entire universe conspires to, you know, make it happen for you. This is it. But क्या ऐसा क्या वो पाठक जी ने इतने सारे वो आज फंडे बताए फिजिक्स के, वो गॉड में तो दिमाग चक्कर आ गया. वो क्या क्या कांस्टेंट है, वो कुछ मुझे याद है, वो कहते हैं 20 चीजें कुछ कांस्टेंट होती हैं, उसके आसपास सारे फिजिक्स के लॉज घूमते हैं. ऐसा कुछ बोला आपने? मैं मेंटली थी यहाँ, आई वॉज नॉट स्लीपिंग. सो अब वो मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब सारा सब तो कंस्पायर करता है, ये होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है. ऐसा ये ऑल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स हैं दैट, यू नो, व्हेन यू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग यू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग इट. करेक्ट? तो आप कोशिश करते हो, एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हो, जैसे अभी मेरे को बताया सब. करेक्ट? करेगा ना? So now this boy is also, you know, thinking कि अब मैं क्या करूं, because he was constantly thinking मैं क्या करूं, how to, you know, sell it. वो जो न्यूज़पेपर मार्केट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक जिन बीमारियां थी, अगर आप हेल्दी नहीं है तो बैंक हेल्दी नहीं रह सकता. और आज हमारी बैंक जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, इससे ज्यादा इतर समस्याएं हमने देखी हैं पूर्व में. हमारे प्रबंधक महानिदेशक अगर यहाँ होते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ होते, तो वो उस दौर को उन्होंने देखा है रहेगा. क्या टेबल उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आई नीडेड दिस काइंड ऑफ हार्ट वार्मिंग वर्ड्स, एंड व्हेन ए फ्रेंड लाइक यू, ही टू वाज नॉट अवेयर दैट वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग, दैट टाइम ही वाज आल्सो नॉट अवेयर. हम उस दिन भी बैंक के साथ खड़े हो गए. हम 90-91 में भी बैंक के साथ खड़े हो गए जब बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉस मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ, उस दिन भी हम खड़े हो गए. मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अभी की जो पीढ़ी है, जिसको हम लोग बोलते हैं यंगर जनरेशन, शायद उस पीढ़ी को मालूम नहीं कि बीच में एक वैसा जब दौर गुजरा कि कोई जनरेशन ही नहीं हुआ. देयर वाज नो रिक्रूटमेंट फॉर अराउंड 15 years इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. और जो गैप हो गया
उस गैप ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया। वो हैंड होल्डिंग जो है, वो पकड़ने वाला हाथ और बढ़ाने वाले हाथ के बीच में एक दूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो 90-91 में जब बैंक हाईएस्ट लॉस मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ, उसके 2 साल के बाद वो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग नेशनलाइज बैंक हुआ। 1997 में फरवरी में जब हमारा आईपीओ आया, मिड एन आईपीओ, तो उस समय ये हर्षद मेहता कांड की वजह से शेयर मार्केट की स्थिति बहुत खराब थी। बावजूद इसके बैंकिंग इंडस्ट्री में जो संगठन थे, क्लरिकल यूनियन और ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, सबों ने यह मेहनत की, यह जानते हुए भी कि प्रिंसिपली वी आर अगेंस्ट दी डिसइन्वेस्टमेंट। जब आईपीओ आया तो जाहिर सी बात, यह डिसइन्वेस्टमेंट था, पर दैट वाज नीडेड फॉर द हेल्थ ऑफ द बैंक। और हमने अपने आइडियोलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया, हमने तब अपना रंग बदला और हमारा आईपीओ 2.85% टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। ईएसपीएस में आप लोगों के अंदर जितनी क्षमताएं हैं शायद उसका बहुत लोगों को अंदाज नहीं है। आप में से कुछ लोग शायद उस चीज को भूल रहे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने। फेडरेशन ने सिंगल हैंडेडली यह डिसीजन लिया कि हमारा ईएसपीएस सफल हो। जिस रेट पे आपको शेयर मिला उसके 50% रेट पे आज शेयर है। आप में से किसी ने संगठन को गाली नहीं दी। यह आपकी सदास्यता है, यह आपका इस बैंक के साथ लगाव है, और जब तक हम और आप हैं इस बैंक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसी ने गाली नहीं दी। उस समय सभी लोग इस बैंक के साथ खड़े हो। हमने उस समय भी रंग बदला, क्योंकि ईएसपीएस भी एक तरह से तो डिसइन्वेस्टमेंट ही था। हम जरूरत के अनुसार बैंक के साथ खड़े हो गए। और पाठक जी ने भी लाइटर वैन में कहा, मैंने भी लाइटर वैन में कहा, हम तो रंग बदले ही नहीं, हम तो पानी। हमें तो आप लोग जैसा मिला देते हैं वैसा आपको दिखने लगते हैं। कभी अच्छे दिखते हैं, कभी बुरे दिखते हैं, कभी 90% एपीआर दे देते हैं, कभी 60% में टरका देते हैं, पता नहीं क्या होगा। हमने कभी रंग नहीं बदला। हमारा जो बॉन्डेज है यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और दोस्तों, बात पीएलआई की हो रही है। अब ऐसा बहुत लोगों को नहीं मालूम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सोमो दत्ता होते तो उनके साथ ये बात होती। ये पीएलआई चला कैसे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एडामेंट, द डीएफएस वॉज एडामेंट। वैसे आजकल जो बैंकिंग इंडस्ट्री की स्थिति हुई है, दुर्दशा हुई है, भैया इसका लाइव स्ट्रीमिंग करना और इसको यूट्यूब में जरूर डालना, उसमें सबसे बड़ा योगदान डीएफएस का। आज डीएफएस वाले हमको छोटी छोटी चीजों में हड़का देते और हम हड़क जाते। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को डीएफएस वाले चला, तो उन्होंने ये डायरेक्शन दिया आईबीए को। सुनील मेहता जी समय आईबीए के चेयरमैन हुआ करते थे, और राजकिरण राय जी जो यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ थे, भी उन्होंने सुपरिनवेंट की 31 तारीख को नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें मैडम शायद यूनियन बैंक में ही थी। 2 कंडीशन गवर्नमेंट के थे कि 1, 2, 3 के बाद ऊपर हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। उनका हम बैंक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। क्यों? कि गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ट्रीटमेंट उनको दे देगी।
और हमारे लोग इस भुलावे में थे कि उन्होंने एक पत्र लिखा कि स्केल 4 और 5 के लोग चूंकि एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपना OSR पढ़ लीजिए। जिस OSR की चर्चा अभी हमारे नकुल भाई ने की थी हमको, उसमें पढ़ लीजिए जो कैटेगराइजेशन है उसमें स्केल 4 और स्केल 5 के लोग सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आते हैं। दे आर नॉट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। तो बात यही हो गया कि सिपाही जी को दरोगा जी कह दिए तो दरोगा जी खुश हो गए और वो फिर बोले हम स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चिट्ठी पाठक जी हड़का के भेज देते हैं, पता चलता 10% लोग एग्जीक्यूटिव हो गए, 90% तो वो सीनियर मैनेजमेंट के रह गए। जब मैं 2 जुलाई को मिला, जब मैं AIBC का चेयरमैन था, तो PNB में जाकर के, और ये हमारे साथ सुमन दत्ता भी थे, दिलीप सहाजी भी थे, मैंने उनको जब कहा कि सर ये है हमारा OSR, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ऐसा थोड़ा कि सुनील मेहता जी को नहीं मालूम था, उनको भी मालूम था। मैं 1984 का DRO, वो 1985 के DRO, और हमारी कहीं न कहीं बहुत बार मुलाकात हो गई थी, तो थोड़ी दोस्ती भी थी। तो ये हुआ कि 4 और 5 का इन प्रिंसिपल दे एग्रीड कि उनका नेगोशिएशन होगा। तो बाद में फिर जब झंझट फंस गया तो हुआ कि नहीं 4 और 5 का फिर वापस लेते हैं। अल्टीमेटली जो हुआ आपको मालूम है कि स्केल 7 या स्केल 8 तक का हो गया। PLI के जो पैरामीटर्स उस समय थे, एंड नीलेश वाज विथ मी, वो पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिंजेंट थे, उसमें किसी भी बैंक में PLI नहीं मिलने वाला था। और हमारी स्थिति यह देखिए, हमारी स्थिति यह है कि हम कुछ भी करेंगे तो हम गाली सुनेंगे। किसी का ट्रांसफर नहीं होगा तो हमको गाली देगा, प्रमोशन नहीं होगा तो हमको गाली देगा, फिनेकल 10 में दिक्कत होगी तो हमको गाली देगा, पाड़ी जी को कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा वाकया हो गया कि 2 मई को मैं मुंबई में था, तो मैंने नीलेश को कहा कि 2 ED स्टेशन में हैं, मैडम और कार्तिकेय जी, तो मुझे उनसे मिलना है और मुझे राजेश राम जी से मिलना है और पाड़ी जी से मिलना है। नीलेश ने मेरे रूम से जैसे राजेश राम जी को फोन किया, उन्होंने धीरे से कहा कि बॉस को लगता है कि मालूम नहीं है कि अब हम IT में नहीं हैं। तो नीलेश हंस रहा, बोले अब डिजिटल बैंकिंग में चलेंगे। वो बता रहे हैं 2-4 दिन पहले ही गए थे। मैं पाड़ी जी के पास गया, मैं सभी लोगों से मिला, मैं पाड़ी जी के पास गया। राजेश भी वहां आए, राजेश इंगले भी आए, हम लोग सभी वहां बैठे हैं। ठीक है, दिक्कतें हैं, दिक्कत उठा कौन रहा है? दिक्कत हमारे लोग उठा रहे हैं, जो फील्ड में लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, हर तरह की परेशानी झेल रहे हैं। एक दिन में 4 शासकर जनरेट हो रहा है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है, और हमारे जितने भी बिजनेस टारगेट हैं उनको करने हैं, प्रेशर उसी तरह से है। बावजूद इसके हमने कभी मैनेजमेंट के सामने कोई शिकायत नहीं की, तो हम रंग कहां बदल रहे? दादा का बहुत बहुत स्वागत। सुमो दत्ता हमारे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सुमो दत्ता को ऊपर लेके आए। मेरे छोटे भाई AIBC के महासचिव, दरवाजा फिर लगा दे, नहीं तो फिर भाग जाएगा। क्योंकि अगर आपको बेहतरीन होना है तो कुछ कष्ट उठाने होंगे। वो कहा जाता है ना कि या तो परिवर्तन का दर्द सहिए, या जैसे हैं वैसे ही रहिए। ठीक है, सूझ है, हम जितना दूर तक पहुंच गए हैं उसका हम पीछे नहीं आ सकते। दिक्कत है, हम दिक्कत उठाएंगे। हमसे
सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उसको अप्रिशिएट करिए। अगर उस दिक्कत की वजह से कोई चीज नहीं हो रही है, आप ह्यूमिलिएट नहीं करिए, गाली नहीं दी, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग हैं जो आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था पीएलआई की, हम और दादा नीलेश पहुंचे राजकिरण राय जी के यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे, और उस समय प्रशांत कुमार जी थे, इनके एमडी, स्टेट बैंक के, जो अभी यस बैंक के बॉस हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही थी। हम लोगों ने दो चीज, एक तो कि जो मैट्रिक्स है वो चेंज करने की बात आई, तो जो 5% हो गया, जो पहले नेट प्रॉफिट था उसको हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा दिया कि कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सब पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है तो उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उसमें ज्यादा लोगों को पीएलआई मिलने की संभावना है। और पीएलआई ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी आर अपोज टू पीएलआई। लेट मी टेल यू, बावजूद इसके हमको बेस सेटलमेंट अगर कराना था, ऑब्जेक्टिव पूरा करना था, तो हम पीएलआई के लिए एग्री कर गए। पाठक जी, तब हमको रंग बदलना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज जरूर इंश्योर किया कि पीएलआई का जो कॉस्ट है वो हमारे बेस सेटलमेंट के कॉस्ट में नहीं आएगा। That will be over and above the total cost which we are going to get. बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए हम लोग, क्योंकि ये अच्छा है कि बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी हम नहीं हैं, तो बहुत बार सोशल मीडिया में कोई गाली नहीं देता है तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी लोग बोलता है वो आपके विषय में ऐसा लिखा है, बोले आपने पढ़ा ना, तो हाँ, तो मैं यही बोलता हूं कि वो आपके लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा, क्योंकि टेक्निकली मैं वो बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं हूं। उसके भी फायदे हैं। पाणी जी बोल रहे थे मेंटल हेल्थ की बात। ट्रेड यूनियन करने वाले को दिमाग की जरूरत कहां है, इसलिए ट्रेड यूनियन करने वाले को कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं देखिएगा। एक भी बता दीजिए ट्रेड यूनियन करने वाला आदमी जो मेंटल डिप्रेशन में रहता हो, क्योंकि वो जो भी करता है दूसरे के लिए करता है, जज्बा से करता है, जज्बा दिमाग से नहीं, दिल से निकलता है, और हार्ट का डिप्रेशन नहीं होता। इसीलिए मैडम ने ठीक कहा कि दिल मांगे मोर। तो मेंटल डिप्रेशन नहीं है। मेंटल डिप्रेशन कैसा होगा? मैडम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिए, किसी बच्चे को 85% नंबर आ जाएगा तो पेरेंट्स क्या क्या उम्मीद करता है कि उसको 90% आ जाए। मैडम वो भी समय बदल गया। अभी क्या होगा कि जैसे आपके बच्चे को 90% आएगा, पता करिएगा कि पड़ोसी के बच्चे को कितना आया। अगर उसको 91% आ गया, आप मेंटली डिप्रेस। तो आप मेंटली डिप्रेस होने का शौक पाल के रखे हुए हैं कि आप दुनिया में आपको सब चीज चाहिए, सब चीज मिल जाएगा और आप सब कुछ कर सकते हैं। यू नो योर कैपेबिलिटीज। बहुत सारी चीजें स्टोरी में जब मैडम बता रही थी तो उन्होंने कहा यू शुड एसेस योरसेल्फ, यू शुड ट्राई टू इंप्रूव, यू शुड ट्राई टू वर्क एज पर योर पोटेंशियल, but never ignore your family, your friends, your relatives. अगर कोई आदमी 10 से 5 तक बैंक का काम ईमानदारी से करे तो शायद ही कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ती होगी। जब जरूरत पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन में तो हम लोगों ने राशन काम किया, उसके बाद भी कभी जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग उस समय बैंक में क्या वो मैट्रिक भी नहीं पास किए होंगे। जब DICGC का क्लेम का आया तो रात रात भर बैठ के लोग क्लेम करते थे कि बैंक का कितना करना है, भाई कर दो कि बैंक को क्लेम मिल जाए। हमने वो किया। लेकिन अगर आज आप इतने लेट आवर्स तक बैठते हैं और इतना काम करते हैं और अगर आपको PLI नहीं मिला तो दोषी कौन है? Who is at fault?
अगर तास्मिता साहब ने कहा ना, कोरोना में हमने बहुत सारे साथियों को खो दिया, हमारी भी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन हमारे बहुत साथी वैसे भी जा रहे हैं हेल्थ हजार्ड्स की वजह से। हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी होनी चाहिए। जो 10 से 5 तक काम करके बैंक का काम खत्म नहीं कर रहा है, अचानक 5 बजे के बाद जब अंधेरा होता है तो उसमें कौन सा वैसा जादू हो जाता है कि वो अचानक बहुत काम करने वाला हो जाता है। वो अंधेरे में भी कुछ चीजें एक्टिव हो जाती हैं। हमारे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, हमारे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आज आप अपने घर और परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके पड़ोसी ध्यान रखने लगेगा, सोचिए आपका क्या होगा। तो मेंटल डिप्रेशन होगा ना। हम चाहे जितना भी वर्क सब करते हैं उनसे कुछ नहीं होगा। मेंटल डिप्रेशन आपको होके रहेगा अगर पड़ोसी ध्यान देगा तो। परिवार आपका है तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो सूरत ऐसी बने कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी चलता रहे। आप हमेशा इस बात को गांठ बांधने के लिए, आप जिस रोजी रोटी को कमाने के लिए निकले हैं, आप ऐसे शायद बहुत कम लोग, मेरे जैसा एक आध आदमी होगा जो ये सोचा होगा कि पैदा ही लिए हैं इस बैंक के, हम जिएंगे या मरेंगे या सनम तेरे लिए। वैसा शायद बहुत लोगों का नहीं होगा। आपको रोजी रोटी कमाते हैं, यू आर गिविंग योर टाइम, एनर्जी, टैलेंट टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन इज गिविंग यू द वेज। आप ये पैसा किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। और उसी परिवार के लिए अगर आपके पास ध्यान नहीं है, आर यू ऑनेस्ट? यू आर नॉट ऑनेस्ट। आर यू रिस्पॉन्सिबल? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Until unless you are very, very contented, very, very satisfied, you cannot give your best to your institution. मैंने वो दौर देखा 2004 और 5 का। तब ये विलय की समस्या सिर्फ 2 बैंकों में थी। इसके पहले 1993 में एक बैंक का विलय हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। द बैकग्राउंड वाज समथिंग डिफरेंट। उस समय एआईबीए ने एक चिट्ठी लिखी अप्रैल महीने में 1993 में गवर्नमेंट को कि ए कंट्री लाइक इंडिया डजंट नीड सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। There should be only 7-8 banks. आज भी 12 बज गए। एआईबीए की अभी भी मांग अधूरी है। वो भले आज जाकर के विलय का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मांगा और गवर्नमेंट ने मौका तारा और सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पीएनबी के साथ हो गया। Both of them are not going or we are not going along well. आज जो मर्ज बैंक हैं, जो हमारे दादा बोले हैं, जो he will speak something on that. It is my good fortune that Somoda has come here. तो इसके बाद अगर आप लोगों को जो सुनना पड़ेगा तो सोमोदा की वजह से, मेरे वजह से। And we are a good host. तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बिना हिले डुले सुनेंगे। वो आपको बताएंगे अनुभव, क्योंकि हमको तो विलय होने का कोई अनुभव ही नहीं है। उनके 8 हाथ उनके साथ विलय हुए डिफरेंट पीरियड में, तो वो बता सकते हैं कि हाँ जी विलय का दर्द क्या होता है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का अभी तक विलय हुआ ही नहीं है, इसलिए वो दर्द हमने नहीं देखा, सिर्फ सुनते हैं। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। तो 2004-5 में ये चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होगा। मैडम आपने नहीं सुना होगा उस समय क्या माहौल बना था कि नहीं, वही हुआ।
अरे आप हमसे मिलिए या हम आपसे मिले, तो जब ये विलय की बात चली हम लोगों के कंधे झुक गए। मुझे याद है कि चेन्नई में AIPOC की मीटिंग थी और सरकार में ऐसे चल रहे थे जैसे वो ट्रेड यूनियन के हमारे बॉस हो गए, ऐश्वर्यन जी ऐसे दब के चल रहे थे। हम लोग तो उस समय वैसे वो टहलुआ थे। अगर उस समय यह स्थिति थी, मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप ये करिए वो करिए, ALM देखिए, आप थर्ड पार्टी करिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम देखिए, वो और भी देखिए, अपना मार्जिन देखिए, मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूंगा, इसलिए कि यह बैंक आज जो भी है आप लोगों की बदौलत है। और उस चीज को देखने के लिए हमारे पास टॉप मैनेजमेंट बैठी है, दे आर आउटरीच प्रोग्राम से वो दे आर गिविंग द राइट मैसेज। गुप्ता साहब ने कहा कि दे हैड बीन टू पटना, इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग। हमने कभी भी वहां पर कोई भी ट्रेड यूनियन की बातें हमने नहीं की, बिकॉज दैट वाज नीड ऑफ द आवर। ट्रेड यूनियन की बात जहां होनी है वहां होनी है, जैसे यहां होनी है यहां हो रही है। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं कि जिस दिन यह चर्चा चल रही थी कि चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करे या बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करे, कंधे झुक गए थे। आज मैं नीलेश का नाम अगर गलती से सुरेश ले लूंगा तो नीलेश को बहुत तकलीफ होगी। दिन रात सर के साथ रहते हैं, सर के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी वर्किंग प्रेसिडेंट भी हो गए हैं, और सर को मेरा नाम नहीं याद रहता। तो मेरे एक बार स्लिप ऑफ टंग से अगर नीलेश इतना दुखी हो सकता है तो आज हमारे फेडरेशन के तमाम साथी यहाँ हुए। मैंने सुबह में ही कहा भैया ऐसा है कि अपना आपस में बैठो, डिसाइड करो फेडरेशन कैसे चलेगा, बहुत हो गया। आज ही मैंने कहा सुमोदा ने एक मीटिंग बुला दी, आई एम इंडीड वेरी थैंकफुल। सिर्फ उन्होंने मुझे एकोमोडेट करने के लिए यहाँ मीटिंग बुलाई, AIPOC की मीटिंग। एक बार इन्होंने इसी मीटिंग प्रपोज किया था तो मेरे पास, मैं अहमदाबाद जाने वाला था, इन्होंने नीलेश से कहा और यह मीटिंग AIPOC की इसलिए बुला दी कि आज मुझे यहाँ आना था तो मेरे कुछ साथी को आना था और बाकी लोग आ गए, तो सभी लोग आज यहाँ शिरकत कर रहे हैं। कल हमारी AIPOC की मीटिंग होगी, जो इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री के जो भी चीजें हैं, वो अहम जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम कल को आपका जो 9th ज्वाइंट नोट है वो भी एजेंडा में है, उसमें भी बातें होंगी। और फिर प्राइवेटाइजेशन और वो उसकी जो लड़ाई है वो अपनी लड़ाई चलती रहेगी, अपने जगह पे चलती रहेगी। हमको सिर्फ ये करना है कि हम बैंक ऑफ इंडिया को बचाते चले, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें। देखिए आज पाटिल जी हैं, मैडम हैं, इसके राय है, दे आर वेरी यंग। Tomorrow their career elevation can take them to some other bank also. आप ऐसे बहुत सारे लोगों को इसी बैंक में रहना। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये बैंक रहना चाहिए। पहाड़ी जी को फिनाइल ट्रेन में जितना परेशान करना हो कर दे, लेकिन कल को उसका आउटकम ऐसा होना चाहिए कि कल को हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाए। हम लोगों ने जिस समय बैंक ज्वाइन किया उस समय बैंक का स्लोगन था यू हैव अ फ्यूचर इन दिस स्टार, बाद में हो गया द बैंक दैट केयर्स, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, होते होते फिर हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। यू ऑल हैव योर फ्यूचर इन दिस स्टार, दिस स्टार मस्ट शाइन। और इससे पहले कि मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूं, मुझे लगता है कि पूर्व के वक्ताओं ने इतनी सारी बातें कह दी और मुझे सिर्फ आपको जगाना था। सुमोदा आ गया तो मेरी जिम्मेवारी भी कम हो गई कि नाउ लीडर ऑफ द इंडस्ट्री इज सिटिंग हियर, सो ही विल टेक केयर ऑफ व्हाटएवर थिंग्स आर देयर एंड प्लीज लिसन टू हिम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर एंड गेट रेडी फॉर दैट। आपको बैंक को भी बचाना है, संगठन को भी बचाना है, और इस दोनों को बचाने के लिए पहले अपने आप को बचाना है।
अपनी रोजी रोटी को बचाना है। आप जब अपनी रोजी रोटी को बचाएंगे तो बैंक खुद ब खुद बच जाएगा। अपने परिवार को बचाना है और त्रिपाठी जी ने चंद बातें कही, हम लोग कभी भी उस चीज का परवाह नहीं करते, कभी भी। अगर हमको कहने आता है तो हमको सहने भी आता है, और हमको अगर हम कहीं सह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कह नहीं रहे, हम कह भी रहे हैं। मैनेजमेंट के लोग अगर इतनी अच्छी बात करेंगे तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा। आज मैं बहुत ज्यादा उदास होकर जा रहा हूं। अरे मैनेजमेंट वैसा हो जो कि हड़काए, डराए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हॉरर मूवी दिखा, तभी संगठन का झंडा ऊंचा रहेगा। नहीं तो पता चलेगा सब काम वही कर रहे हैं तो हम क्या करें। इसलिए अरे सर अभी रंग की बात नहीं, अपने जुर्म की बेइंतहा कर डाली। हो सकता है कल आपको मेरे जैसा बेजुबान मिले ना मिले। मैं पुनः एक बार आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे एक करबद्ध निवेदन करता हूं। बहुत उम्मीद के साथ नीलेश को हमने एलिवेट किया, और कहीं किसी के जहन में यह बात होगी कि हम सक्सेशन प्लान नहीं रखते हैं। सक्सेशन प्लान इज इन द प्लेस। आज मेरे जो भी फेडरेशन के साथी हैं, मैंने उनको कहा कि बैठिए और बैठ करके आप लोग डिसाइड करिए सक्सेशन प्लान, और रात में मेरे पास आइए, क्योंकि रात में सब जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन क्या किया है। मेरे पास आएगा तो कोई बिना कुछ किए हुए आएगा, तो सीरियस डिस्कशंस होंगे एंड दे विल कम आउट। आई सीक सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन फॉर नीलेश फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेट हिम step up, let him groom like a leader of the industry. He had been helping me out. He was working as my secretary. He will continue to work as my secretary here in the head office. और आज इंग्लिश साहब नहीं है, बाकी दोनों ईडी चले गए तो मैडम है, तो सीनियर मोस्ट इन दी हायरार्की। एक छोटा सा जगह चाहिए हम लोगों को भी हेड ऑफिस में है, इसलिए कि फेडरेशन के लोग आते हैं तो कहाँ जाएंगे, कभी इनके चैम्बर में कभी उनके चैम्बर में, अच्छा नहीं लगता। एक ऑफिस जरूर होना चाहिए। मुझे ना सही नीलेश को ही दे दीजिए, एक छोटा सा ऑफिस नीलेश को यहां मिल जाए, ताकि नीलेश संगठन का काम भी देख सके। बैंक का काम नीलेश देखता ही। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि आप लोग नीलेश को अपना सपोर्ट, अपना प्यार जरूर दीजिए। मैंने जो चंद बातें कही है उसमें हो सकता है कि किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो मैंने इसीलिए कही है कि वैसे लोगों को बुरी लगनी ही चाहिए, तो मेरा कोई कसूर नहीं। पित्त के रोगी को गुड़ तीता लगेगा तो इलाज पित्त का नहीं, गुड़ का नहीं होगा, पित्त का होगा। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में लेना शुरू करिए। हमारा शुमार शेखर कदम जैसे लोगों में, सुनील सुशीलन जैसे लोगों में, कॉमरेड त्रिपाठी जैसे लोगों में है कि हमने लगभग 4 डिकेड इस बैंक को दिया है, और जब बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की तो ट्रेड यूनियन चुना, इसलिए हम लोग मेंटली डिप्रेस नहीं हुए। ये वो जज्बा है जो दिल से वो है, 2 स्पार्क आपके अंदर होना चाहिए। और इसीलिए जब कैरियर की शुरुआत की नीलेश को भी बोलता है
कि हर ख्वाहिश को खाक कर दिया, क्योंकि पांव हमसे पकड़े न गए, तो हमने ये रास्ता चुन लिया। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करिए, अपनी डिग्निटी के साथ समझौता नहीं करिए। आप बैंक के ऑफिसर ही नहीं हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के फादर हैं, किसी के ब्रदर हैं, किसी के सन हैं। इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी, अगर ये आप नहीं फील करिएगा तो हम लोग का होना बेकार है। Once again with these all few words, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय बैंक ऑफ इंडिया, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। We request all the comrades to wait for another 5 minutes, please. Please be seated. I once again request everyone to please be seated. हेलो कॉमरेड, प्लीज सौम्या दत्ता का हम यहाँ फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद उनके भाषण कहा है, और कृपया आप लोग उसके बाद ही लंच के लिए जाएं। बस थोड़ा सा बैठ जाइए। कॉमरेड्स, बाहर जाके फायदा नहीं है क्योंकि लंच अभी खुला नहीं है, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, लेट अस सी। आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, एवरीबडीज टाइम इज प्रेशियस। ऑल द लीडर्स हैव फ्लोन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स just to meet you all. Our executives had a flight to catch. They preponed. कार्तिकेयन साहब कल तिरुपति से आए. Night he is going to Delhi again. दासगुप्ता साहब का भी मेडिकल चेकअप था. Madam has to catch a flight. Still she is sitting here. Let us show the discipline that we are known for. We are here since 9:30. I know. Few minutes more. Let us not break the discipline, comrades. Thank you. Thank you, Shri Sunil Kumar sir, for your thunderous and enlightening speech. We are glad that Comrade Soumya Datta sir, General Secretary of AIBOC, has joined with us now on this splendid day. I now request Shri Sunil Kumar sir and Comrade Nilesh Pawar sir to felicitate Comrade Soumya Datta sir. Thank you, sirs, for doing the honor. May I now invite our AIBOC General Secretary, Comrade Soumya Datta sir,
to deliver his honorable speech to this eminent gathering. Comrade President of the meeting, Sanjay ji, respected Sunil ji, Dada, ED Madam, CGMHR, Comrade Sanjay Das, and of course, I saw a teaser, Commit the hour, commit the cavalry. I'll just change it, commit the hour, commit the man. I think today is Neeraj's show, and this entire hall full of comrades of Mumbai and Goa, you proved what Federation of Bank of India Officers Association is capable of, the strongest pillar of AIBOC. I am so glad to see my friends, the seniors and the juniors, the exuberance of youth tempered with the wisdom of the seniors. That is the hallmark of this organization. And it's my privilege to share stage with Sunil ji, with whom we had fought the battle of the 8 joint note. I came across a clip by one of the ex-chairman of the bank who said that your side was not well represented in this. I could only swallow with a liberal dose of salt, because Sunil ji is there. The firepower behind this entire joint note, when we fought side by side, we did not yield a single inch, and we achieved what was possible under the circumstances to sign a historic 8 joint note. I had told Nilesh, you take a printout of your October salary slip and compare it when you get the arrears. Get you this pay structure. He called me. So, Dada, my pay hike has been, gross pay hike is over 25,000. It has never happened in the history of salary revision. But then there are so many stones left unturned. Now today is the World Environment Day. I was so glad to receive a sapling. Today we are trying for a cleaner and a greener environment. In the industry levels across banks, we would like to celebrate this World Environment Day as a day which will remove us of the toxicity that's prevailing in many institutions, particularly for the officers who are working in an environment where your self-esteem has to be compromised. When you go to the office, sometimes it has to be kept in the bank's locker. And unfortunately, you're paying the same rate as that of your customer. Even the customers are paying lesser locker rent. So on this day, let us, along with for a cleaner and a greener planet, let us also take a pledge to make our work environment devoid of negativity, devoid of this negative vibes and the toxicity that is happening across many banks. Now coming back to today's meeting, as I said, come at the hour, come at the man. You are there from 9:30. Everybody, Sunil ji's speech is always, even I had to cut my speech short at the meeting of SBI Mumbai Metro Circle, so that I could reach before the meeting concludes. Now, I will not take much of your time, but then we are standing at a cusp of a time when we are under existential threat. When the entire public sector space is being trampled upon to fill the coffers of the crony corporate houses, so this, whatever name you give it, national monetization pipeline or whatever. Now the last bastion standing is the banking sector. RBI is yet to budge, although RBI has been forced, quote unquote, forced to shell out dividends, shell out reserve funds. But still RBI has not budged giving banking license to these crony corporate houses. That is a very important factor. Adanis and Ambanis are waiting to get this license so that their NPAs are written off. Banks will go bust and they will be laughing all the way to their Swiss banks at the cost of the common citizenry. Can we let that happen? That is the moot question. That is what Sunil has said. Yes, let us take a decision. Yes, 5-day week is very dear to us. Your meeting is there and we will give a call. IB is sitting on this stagnation increment clarification on the 5-day week, the residual issues. We have to give a clarion call, if not UIBU, it has to be IBUC. That is specifically we had this IBUC meeting schedule, of course. I asked Dada if whatever date you suggest, we can. Pankaj ji had been, why IBUC? I said it is Sunil ji's availability. I have to tag it with Sunil ji's availability. So on this note, seeing this full house,
Let us take a pledge. Yes, we have to save our banks. We, not only our jobs, we all know what will happen, we are employees. Our jobs is one. Secondly, we cannot take away this, we cannot allow these crony corporate houses to take hold of the deposits of common citizenry and make the banks go past and throwing them into the wolves for them to. The country's the GDP is going down, inflationary trends, rates are being hiked, yet we find EPF rates being slashed. Why? They want to divert the funds to the stock market so that it is propped up, showing a rosy picture of India shining at the cost of 5 crore workers who cannot even have 2 square meals a day. So on that note, let us fight to save our banks. Let us fight to save our country, and let us be the last bastion standing in the front of this brute of a government who is trying to trample upon our fundamental rights. On that note, let us fight for a better tomorrow. AIBOC, long live Federation of India, Bank of India. Thank you so much, sir, for those great words. It's my distinct honor to invite the most charismatic and beloved comrade Nilesh Pawar, sir, to deliver the vote of thanks. President of this meeting, Comrade Sanjay Save ji, Chairman Comrade M.B. Tripathi ji, President of our Federation, Sanjay Da, Chairman Madhusudana sir, our beloved AIBOC General Secretary Comrade Samay Datta ji, our esteemed Executive Director Monica Kalia Madam, two Executive Directors in absentia, Sarup Das Gupta sir and Karthikeyan sir, our beloved CGM HR, Patak Saab, NBG GM, Roy sir, and the leader of leaders, the lion of trade union, the lion of banking industry, Comrade Sunil Kumar ji, and all our distinguished guests who have come here, and most important, each one of you, especially our comrades from Raigad zone who have travelled for 5 to 6 hours. They started in the morning at 5:30, 6 o'clock and have come here for the meeting. I had many things written, but I know I'll not come in between you and your lunch. But just one thing I would like to share it with you all. Our bank is trying whatever best it can to give you. We all have seen the bouquet of perks and perquisites that have been recently enhanced. Lease rental, vehicle loan. Our federation is very actively pursuing the staff housing loan. I'm sure in the coming HR committee or board meeting, we'll be able to clinch that also, because there is active discussions going on. You all must have seen the CCC minutes. We want all the staff housing loans to be insured, because life, you never know, death is very uncertain. So it will be my again and humble appeal to our top management to kindly consider the request of ensuring all the staff housing loans, because we saw recently in COVID, we all saw we lost more than 146 of our colleagues, and that family was literally staring at a liability of 30, 40, 50 lakh rupees, and the entire terminal benefits was being given to squaring of those loans. So you just understand the importance. आप लोग को लग रहा होगा कि हाउसिंग लोन इंश्योर होने से क्या होगा, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिस घर का ब्रेड अर्नर नहीं रहा, उसके लिए उस इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा जरूरत है. Apart from that, comrades, our federation is actively pursuing all needs that you want. जो भी हमारे पर्स परक्विजिट्स है, things that you want for your dignity, everything is being actively discussed, and very soon जो हमारा बाकी भी residual issues है of 8 joint note, Somedata Saab, he himself being one of the architects of this joint note, he has clarified. Tomorrow we are having All India Bank Officers Confederation EC meeting, where more than 130 delegates across India, across all the banks have come in. So they will be having a discussion. Comrades, आप सबके लिए फेडरेशन ने, आप सबको शायद याद होगा, 1 साल पहले
हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी को बहुत पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट किया था, एंड आवर मैनेजमेंट वाज बेनेवलेंट इनफ टू कंसीडर दैट, एंड आवर बेनेवलेंस स्कीम वाज changed, and let me tell you, it is one of its in the industry. Last year, I take immense pride in saying this, Patak Sahab, around 170 applications came for compassionate appointment and 150 have been sanctioned. This is just because of the coordination that federation and our top management has. So, your federation, your management is trying to do whatever best they can to secure your future. You just do what it takes to secure your bank, to secure your organization. And how can you do that? By proactively working wherever you are there, in branch, in administrative office, jahan pe bhi hai, within the legal frame. I'll just touch upon, be the knowledge worker, circular padhiye, sahi se jo hai, within legal ambit, wo kaam kariye, ताकि बैंक अच्छे से ग्रो करे, कस्टमर सर्विस अच्छे दीजिए. और रही बात संगठन की, संगठन का जब भी कॉल आएगा फॉर फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, आइए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है. Apart from physical demonstrations, we all know there is a very big weapon that we all have, we carry with us. It's the social media, the mobile phones that we carry. Twitter पे, Facebook पे, we are having Bank Bachao, Desh Bachao campaigns. Twitter पे, we are having various Twitter campaigns. उसको आपको support करना है, because you have just recently seen the power of social media when actor Akshay Kumar had to give away his crores just because there was a huge uproar in social media. This is the power of social media, comrades. Sitting at home, you can cause ripples across the nation. So don't underestimate yourself. जहाँ पे भी आप बैठे हैं, at least social media पे contribute करिए. And इसके अलावा, I'll not take much time, but once again, thanking each one of you, especially our zonal managers. I'm just cutting short time. Our respected general managers. Parate Saab was also at come, Vilas Parate ji, but due to some medical appointment, he had to leave early. So, Ingle ji, Padi Saab, Parate ji, our zonal managers, deputy zonal managers, DGM, LCBs, all our leaders across India, the galaxy of leaders that we are having, Prabirda from AIBOC, our ex-leaders, Shekhar Kadam Saab, Sunil Suchilan Saab, Aruna Madam, everybody, and on top, thanking each one of you for sparing around 6 hours, more than 6 hours of your Sunday for this, but it was because of you, क्योंकि आपको इससे you are taking something away for it, and let me tell you, सिर्फ आपका नहीं है, they have traveled 4 to 5 hours just to interact with you. So, once again, thanking each one of you, thanking the authorities of this hall, thanking the catering committee. Thank you, comrades. We'll close the session with our national anthem. So I'll request all the comrades to stand up for national anthem, please.